Look, hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, on my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip it tray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young lives change, Hate them more cause I'm up and I don't even fly like, but up here I see rappers lying, dark clothes, high things. I know they hiding, but what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, look, know it's my time, you must not rise. You was on my time when I ride in the beat. Manipulate time like you do with they minds. I'm sick and tired of the lies that you preach. Only up I climb, I'ma leave y'all down. I can show y'all high like the birds and the bees. Everybody tryna stunt like they know the focus up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it 10 toes, and if I choke up, I'm licking emotions. Roll me to this paper, hey, I'll see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but ooh, I fucking hate now you. Now what you hiding from? You tryna run, you know I'm about to grill your ass. Hey, boy, you tripping like a blind man. You can't see how you think you can fly past my wide wings. Try to wriggle down with you, that's fine by me. Only drip you ever had when they provide IVs. In the doctor, got my doctor in a life, little man. Asking like I care about the price, little man. It can hate that I had a dice in my hand. Throw what I knew I was against what y'all saying. And over my head, the ones that's with me solid. Rocks that I've been leaning on to keep me up and climbing. This is what the climb is. Word to Miley Cyrus. I will never change, I only grow. I hope you ride with me. Been too long, but I'm finally sick of giving just a single fuck about anybody that's not with me. Yeah, I don't really got time for your bitch ass trying to just use your fame to deceive their minds like you care about the commerce store from my closest friends. Don't believe it, I'm fine, but I see what you've been on from this. I shake my head, I'm shaking my fucking head. That's you, I'm too different, my vision give me the best skill. Album hits every single feeling you can't feel. Only fakes, every bar swears trash. They all want me to collab, but you're not worth it to me, man. Why would I give a verse when I body your work? I don't wanna start beef, but I'm sick of people mad cause I don't give a verse. It's how I feel, I keep it real, had to clear the clouds, they disperse. Like when they flee and when they see me, you gon' bow and call me sir, yeah. Bitch. हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या क्या बात हो रही है, क्या किसी कांड हो गया? मैपल, हेलो ब्रो, समांतो, ड्रैगन सेनपाई, वेलकम स्ट्रीम एवरीबॉडी। कैसे हो? तबीयत ख़राब है, स्ट्रीम पर नहीं रह पाऊँगा ज़्यादा। अच्छा ठीक है, ओके। यो शांत। हाथ को क्या हुआ? हाथ को क्या हुआ ब्रो? मैं लोहे के रोड से टक्कर आ गया। सामान तो सही लिखा उसने। अरे मैं जल्दीबाजी कर रहा था, जाना था मैं शाम को, और मैं तेज चक्कर में फटाफट लोहे का रोड था। मतलब एक विंडो बनी हुई है ना, तो उसके आउटर साइड लोहे वाली है, तो वहीं पर जाके एकदम कोई नहीं लगी, पटाख करके बहुत तेज़ लगी भाई। मैंने बोला तब भी चले जाता हूँ। मैंने बैग पैक करके जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी करके दर्द बढ़ने लग गया। मैं हैंड की मूवमेंट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ये वो ना सूज गया है थोड़ा सा कोनी की तरफ, तो मूवमेंट करने में बहुत दर्द हो रही है। क्या बोलूँ मैं? हाँ, होता है। बट लोहे की रोड जैसे समझ लो ब्रो, जैसे एक क्या बोलते हैं, कांच का शीशा लगा रखा होगा ना कहीं पर तुमने, उसके जय श्री राम काजिल। लोहे की रॉड निकलवा लूँगा। कुछ नहीं भाई, वो ना है। अच्छा, मैंने कहा किसी ने मारा। ना पागल है क्या? यो सेनपाई व्हाट्सअप, कांग्रेस हाथ तोड़वा दिया। अरे अपना तो रोज का है, रोज का फील है। फील बेटर सून नाट्सू। अरे थैंक यू ब्रो। हाँ भाई, चाहे कुछ हो रहा है, अब मेरी स्ट्रीमिंग नहीं रुकनी चाहिए। हॉस्पिटल में बैठे बैठे स्ट्रीम करूँगा अगर वाईफाई अलाउड कर दिया उसने।
मैं भी आऊं। गिलगमेश आ तो सकता है जब तक वो नहीं हो रहा, मर गया गया। अशुरा अशुरा लॉल, आजा आजा तू भी आजा, गिलगमेश आजा। क्या नहीं हो रहा? जब तक मैं कॉम्पी के लिए देखूंगा नहीं तब तक खेल ले। आ भी गया, खोल के बैठा था क्या? रेडी करके बैठा था ये तो तवा। आया वेलो, आजा। मेरी भी एक बार हाथ टूटा था, जो रिस्ट होता है वहाँ की हड्डी टूट गई थी। कम से कम 7-8 महीने लगे मेरे हाथ को ठीक होने पे। हाँ वो तो होता है यार, हड्डी वड्डी टूटी तो होगा। चलो भाई, होता होता होता, चलो। यहाँ पर लिख देते हैं पहले। बाय द वे डीपी देखो। यस यस, खुताओ डीपी। आई कैन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। मेरा दिमाग टूट गया। अबे गाजिल, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तेरे पे दिमाग भी था। अरे 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 भाई, मेरा वाईफाई जा रहा है। एक सेकंड। फिर गया, मैच फाउंड। एक बोल के गायब हो गया। 10 वॉचिंग 6 लाइक्स। गाइस किसने लाइक नहीं करा फटाफट लाइक कर दो भाई। गद्दारी कितने करते हैं भाई बंदे, गद्दारी खोर पे। मुझे आज क्रिम्सन फेदर मिला 8 पॉइंट इतना और 21 सीडी। ओ बेटे मचे। मैं ये बोल रहा था कि मेरा 1 सेकंड के लिए वाईफाई जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर वापस रिकनेक्ट हो जा रहा है। Oh, 7 started 7 minutes ago. 7 likes. You know the reason. 7 थाला for reason. ठीक है भाई, बट तब भी यार 10 बंदे तो 10 वॉचिंग होने की है। SQD यूनिक। हे क्लासिक से बन गया। अबे एम नहीं लग रहा। अरे मैं मुंह पे गया एक बंदे के, तब भी नहीं मार पाया। इसकी मेरे को भी फेदर मिला इतना सीडी 10 यार। आहा गाजिल वाह। 5 वॉचिंग अब 10 से 5। ये कैसी गिरावट थी, ये तो डबल का गिरावट हो गई हमारी। नहीं अरे पागल। अच्छा हे हे
एल कैलिक। नहीं लग रहा यार, मेरा बफर कर रहा है या किसी और का भी। वेलोगे का साइड इफेक्ट, मेरा इतना का क्या ही बफर होगा। 114। हाँ, गिलगामेश कौन सा बना है? ओह ब्रिज। क्राउड स्प्रे। आजा आजा। अबे यार पनिशर। छी, पाशा भाई मैं निकलता हूँ। ओके ये महीना लग रहा। नहीं पागल साइज था मेरा भी। बहुत जल्दी आया है। नहीं ज़्यादा फोकस पे एक बार जा रहा, 2 दिन तक थोड़ा बिजी, उसके बाद फ्री। अच्छा Woohoo! Remaining. नहीं अबे 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 छी 5 kills remaining. एक मिनट हेलो किंगस्लेयर कैसा है? वेलकम स्ट्रीम।
और ब्रेकफास्ट हो गया क्या सबका? हाँ हाँ हो गया। One kill remaining. किंग्सलेयर वैलो है, यस वैलो खेलेंगे थोड़ा सा। यो 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 माइस्टोगन यो, मुझे तो लगा कि स्ट्रीम होगी ही नहीं आज। अरे अरे हाथ तोड़ के करते हम। अरे मैं मस्त, तुम बताओ। अबे मेरा भी नोटिफिकेशन नहीं आया स्ट्रीम का। ओ चलो, होता है भाई, इसका पता नहीं क्या है, नहीं आता। इजना की कहाँ गया? ये ज्वाइन करा पार्टी में, नहीं करा? अच्छा ये दूसरी पार्टी में चलेगा गिलगामेश की। मैं वही बोलूं, कंफ्यूज। मैं कर डाउनलोड कर रहा हूँ वॉरफेयर। अच्छा Match found. वॉचिंग नीचे, हाँ हाँ बट कोई ना, मुझे ओनली गेंशिन गेंशिन तो ना करना है। पीछे से मारता है साले, क्लासिक यूज कर रहा हूँ ऊपर से। कैसे कहते हो? पट पट खूब्स गर्लफ्रेंड, खूब्स गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आई है। ए उससे खेल के तुझे रिव्यू दूंगा कि तू स्ट्रीम करे। हाँ ठीक है। हाँ इन लोग को मिस नाविया का आईडी के बारे में जानना है, बता दो। मिस नाविया की? अरे मैंने उसकी सर्च मार रही, मुझे मिल भी गई, बट उसके तो 900 प्लस के सब्सक्राइब वो है, फॉलोअर 900 के प्लस, 1 मिलियन होने वाले उसके, अगर वही हुई तो वो। और वो उसका नहीं था भाई, वो जो हम सोच रहे थे वो उस चीज़ की नहीं थी। फिर किस चीज़ की? वो कॉस्प्लेयर है, वायरलेस इसलिए क्योंकि कॉस्प्ले करती हो। तो कॉस्प्लेयर तो ओनली फैन क्यों रखी है उसने? मैं वायरलेस इसलिए बोला क्योंकि पता नहीं, उसमें नहीं दिखा, वो ट्विटर में दिखी उसकी आईडी। जाने के बाद में सेटअप अपग्रेड करूंगा सोचा था, तो ये फाइनल मांग्स होगा, चेंज नहीं होगा। एक काम कर, उसका वो भेज दे थैंक्स को, थैंक्स खोज निकालेगा सब चीज। हाँ ठीक है। देख देख थैंक्स, तेरा खोजने का कुछ बात चल रहा है। यस दैट इज थैंक्स समनिंग जुत्सु। ये कौन था? कौन? क्या वैलो? नहीं साला नात्सु बच गया। इसकी कॉस्प्ले वाली ना? हाँ हाँ हाँ। अरे नहीं, मेरे साथ भी तो सेम ओनली होने वाला गेंशिन मत करो, कोई और गेम ट्राई करो, वैलो ना बोल। तो अब उसको क्या ही बोलूंगा। अरे तो मेरा वो तो आने दो मॉनिटर, उसके बाद तो करूंगा और गेम। वैलो खोल दिया वो तो अच्छा, वो उससे बड़े ना, अनरेटेड। मुझे भी बताओ, ओनली फैंस सुन के मेरे हरकत पे आ गए, बताओ अभी। नहीं ओनली फैंस डिस्कशन नॉट ऑन स्ट्रीम, वही तो कह रहा हूँ, नॉट ऑन स्ट्रीम भाई। तो मैंने दिया था फिर पेनल्टी अलग। ए पीछे से मारता मुगु मुगु। हाँ
143. अरे नहीं, टाइमिंग गलत थी भाई इसकी आने की। पफ। ये मुझे वो क्या नाम होता है वो वैरायटी स्टेप्स क्या तो कुछ तो होता है क्या स्टेप्स वाला क्या नाम होता है बैंग ब्रोस या बैंग ब्रोस कैम कर रहा है उसका स्क्रिप्ट क्यों लग रहा है तो दोनों जगह आवाज जा रहा है इतना की क्या लड़कियों को भी बुलाता होगा Smart move. अच्छा Found the spy. अच्छा ओके अच्छा ऑनेस्टली सर को उम्र क्या है डीसी पे तो सर को उम्र क्या? नात्सु अपने ओनली फैंस का लिंक देगा। सर को उम्र क्या अच्छा प्राइवेट चैट पता चल जाएगा सब पर। सीधे डीसी बता दो। रिपोर्ट मार रहा है ओके जो भी होता है रियल लाइफ में क्या 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 ओ एंगल लेके बैठा है। Found the spy. अच्छा तेरा एग्जाम खत्म अच्छा तेरा बोल रहा था मैं एग्जाम ये खत्म एक एक सेकंड के लिए मर रहा है बे वो तेरे को बस स्ट्रीम इफेक्ट कर रहा है बाकी गेम इफेक्ट नहीं कर रहा है Kill. मैं बॉडी मारता मटर पनीर पैर पे मारता है ओह हील लेने वाला था मार जिससे पहले। या ये नात्सु है नियम नात्सु को मारेंगे फिर वाह पैरासीटामोल पैरासीटामोल तो कैम कर रहा है कोने कोने में बैठ रहा है। आ रहे तो अच्छा मैं इसका स्ट्रीम देख रहा हूँ अबे 105 बगल से कोई मार गया ना तो बच गया अरे मेरी की अबे यार खुद चल रहा बंदा आगे। मटर पनीर पीछे से मारता है मटर पनीर डे एंड दैट यू यो किलर निंजा। रियल लाइफ में मांगता है वो व्यू अपने को ये क्या था मारू से कौन है अबे यार दे तो रहा था लेकिन तेरे को भी लग जाता कवर से Nice try. इसकी 10 kills remaining. कौन मार रहा है साइफर ही मार रहा है मैं इसके पास स्पॉन हो रहा हूँ। Found the spy. तो बिल्ली है Found the spy. हैं सुनपुरी व्हाट उफ नवे के लिए चूर हो रहा है। कुछ गंदा बोलने वाला था मैं सॉरी बट नहीं बोल सकता। दिस इज नॉट एन 18+ स्ट्रीम सो मैं रुक गया। ओ साइड से मार गया कोई। नहीं ऊपर खाबड़ जगह मेरी छी छी और बैठे रहो कैंप करके वहाँ पे कैम करके नहीं बेटे तो वहीं स्पॉन हुआ था मैं। 5 kills remaining. ये देख रहा है ए एड़ा मटर पनीर पीछे से मारता है पीछे नहीं तू भाग रहा था साइड से मार मैं बुला नहीं सकता था बुला उड़ जाता है मार के चल जाता है ये बुला दिया बुलाया कहा मैं तो गन 1 निकाल kill रहा था remaining. निकालने भी नहीं दिया देख लो नात्सु ऐसे में देख भाई और गड़बड़ मार चल रहा है जाएगा और बोलेंगे मारता तो है कंडम निकल रही है ओ स्ट्रीम चल रही है
और शिट, तो पहले बोला करो नहीं सबको। पागल। आई को ये सब कैंसिल पहले खेलने। बोला करना होता है, ये पहले बोला करना होता है भाई। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो यार? और तेरे को क्यों डर है? मेरे को तेरे को Horizon किधर का डर है? ऑपरेटर आया है स्टोर में। राहुल हाँ तो पूरा तेरे को सेट किधर लेगा डर तू है? कराया हुआ बंद तो कर रहा है। पागल। सेम सेम, मुझे भी अशूरा का बंद करने दो। हाँ मैं वही बोल रहा था, इसमें तेरे को तो मेरा भी बंद कर लो। छोड़ो, नहीं लूंगा रे, मेरे पास ऑलरेडी 2 ऑपरेटर है, क्लासिक लूंगा। एक और बंदे को बुलाओ, करेंगे कॉम्पी पॉम्पी। अशूरा अशूरा मेज पंक स्पार्क स्विच। वो आउट ऑफ अशोरा। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ इतना ये प्लेट 2 मेज पंक स्पार्क स्विच। ये कब कुछ आया इसको? प्लेट 2 नहीं ये नहीं कैरी हो रहा है। हाँ वो तो पता है, प्लेट 2 कब पहुंच गया? प्लेट 2 अशूरा ले कैरी दे। होता है फ्लैट 2। कौन कौन कैरी हो रहा है साले? जाके देखो नात्सु बोला। stats। आजा, तभी तब से पिट रहा था नहीं नाट्सु। वाह। पिटे ज्यादा बोलेगा। क्या कॉम्पी खेलेगा कि अनरेटेड खेलेगा बे? क्या अनरेटेड खेल खेलेगा रहा तो कोई व्यूअर को भी बुला लेना, उन लोग भी खेल ही रहे हैं अभी। कौन व्यूअर? कोई ना खेल रहा। पिट रहा ना। हाँ आ रहा है। कौन आ रहा है? ये नात्सु ओके। शैंक्स का फ्रेंड। ए Rat, इन्फेक्टेड रैट था ना, ये क्या नाम लगा दिया अभी? मैंने पढ़ा वो नाम। ओ भाई अच्छा बट एयरटेल मैं उनको एक दिन बोल दिया पैकेट लॉस, अरे देख लो कुछ कर लो करके, अगले दिन ठीक कर दिया। ऐप तो भाई वहाँ पे हफ्ते लेता था। ए उसका स्ट्रीम आवाज आ रहा है। जा तो रहा है। अरे कम कर ले भाई थोड़ा। किंग स्लेयर, वाह। क्या मिस्टेकन सब लोग जैसी फैंस के बारे में सुने एकदम एक्टिव हो गए इन लोग। नहीं देखो फैंस चीज़ ही ऐसी होती, गर्मी के मौसम में फैन तो चाहिए होता है सबको लंदन को। मैं तापमान की गर्मी का बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गए। वापस गया बीएसएनएल, वाह। वापस आ गया। अबे जा रहा है यार, उसका कुछ अलग ही लोचा है आज। एक काम कर ले, वो उसको पेमेंट फिर से कर दे, रूट गया होगा तेरे से। चलो मैं जा रहा एक गेम खेलूंगा फिर प्रोजेक्ट पे। पूरा नीचे व्यूज चले गए वे। ये न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड। जब से लगता है वो लोग YouTube छोड़ के फैंस पे चले गए। This looks like G Pro wireless, honestly. Actually नहीं, मुझे वो G304 इसलिए है क्योंकि वो वायरलेस भी है काइंड ऑफ, उसका प्राइस भी डिसेंट लगा मेरे को कंपेयर टू मतलब G Pro wireless में और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? पक्का सेंसर होगा, पक्का सेंसर डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली। अब तो किरण इधर चुप रह ले बेटे। मैं तेरे को मेरा YouTube का आईडी पासवर्ड दे दूंगा, अगर मेरा बीएसएनएल उड़ गया तो तू ऑनलाइन आके गिव अवे कर जाइयो। मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है। अरे बोल दो, देख लो मैं पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ 50-50। बोलो हम तो इजी है, सिलेक्ट रैंडम नंबर। तेरे को सिलेक्टेड। अच्छा ठीक है, अच्छा से करेंगे। मैं तो यही कह रहा था। अब थोड़ी ना मैं जो बोल दिया। वैसे भी अगर तुम में से किसी को भी है तो पैसा तो दूंगा नहीं तुम लोग को, बाहर में जाओ तुम लोग। ऐश्वर्या चीटिंग नहीं। ये ऐसे मार के दे रहा तू। शैंक्स। कौन? शैंक्स। का पहले मैं कुछ बात बता, ये देख फिर स्टार्ट हो गया। तू क्या करेगा? मैं तू नहीं गेंशिन खेलता है, वाला नहीं तेरे को खेलता हूँ वैलो में भी RGX कोई ले। स्किन अरे चाहिए। मेरे को ये दे देना मेज पंक स्पार्क स्विच, अभी आया ओ देखो। भाई 500 रुपए में साहब। तेरे को स्पार्क फील्ड आ जाएगा। हाँ उसमें मतलब मैं जाता बोल भी सकता। अरे ईजांगी भैया, ये कर फ्रीडम लो ऑफ यूज। स्पीच है ही नहीं। नहीं है भाई। क्या रहता है वो? जरा बताना तो इस नव्य का क्या सीन है?
हाँ तो साला मैं जेड फैंटम मुझे- लेके आलिचिनो ना निकाल लूं। नहीं तो OLX पे उत्तेजना अकाउंट हो डालो ना रही है ये जानने नहीं की जो नावे चाहिए परविश नहीं है। अकाउंट ओलिक्स पे देखो आजकल फ्लैट जमीन सब ना आता है, कभी कभी कुत्ता भी देखा हूं मैं। हाँ OLX पे बिकता है। यस इट सेल्स ब्रो, हर चीज बिकता है OLX पे। अरे नहीं ये सब दिखेगा मेरा ग्राफिक कार्ड नहीं सही में पता है ये सब PHP दिखेगा, PHP मेरा को एक graphic बंदा card बोल चाहिए। रहा था, ये नहीं दिखेगा। PHP को एक बंदा बोल रहा था कि उसको क्या क्या बिक रहा है, मैंने ओलेक्स पे बच्चे को बिकते हुए बोल रहा देखा है। एक मेरा व्यूअर बोल रहा है मैंने ओलेक्स पे बच्चे को बिकते हुए देखा है। वेट बच्चे क्या कटा, किसका कटा? फक व्हाट आवाज कटा, किसका कटा? और फक हमारा ही कटा। हम लोग का ही कटेगा वाईफाई और किसका कट कटेगा? गया कट गया कट गया। वाह उसका वाईफाई कट गया, रुक वापस आन। देख शायद तो मेरा एक ही है BSNL, जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे। वो नात्सु ही था। ओ भाई अच्छा नात्सु मेरे में कैसे नाम लगा रहा बेटे? तेरा भी वाईफाई गया? नहीं नहीं ओएलएक्स पे तेरा को क्यों क्या बोलते हैं बीट बॉक्स जैसे रोबोटिक वॉइस में दे रहा है फीडबैक? न्यू पता तेरे नहीं। को सुनाई दे रहा है। हमें सुनाई दे रहा है वैसा वैलो का आवाज कटा है। अब मेरे को तो क्लियर हम्म बेंक्यू जोवी तो ये था ना, मॉनिटर था ना, व्हाट द नहीं हेल। वो सब बनाता है, वो माउस बनाता है सब। हाँ वो भाई सब पे उतर गया। देखो हाइपरएक्स मत लेना, मैं इतना बोलूंगा रेजर सही है, लॉजिटेक सही है। हाँ मैं यही दोनों पे सोचा बट रेजर का मुझे मिला नहीं इस प्राइस पॉइंट पे। रेजर तो मैं रेकमेंड करूंगा और लॉजिटेक तो सेम वो मुझे कम पे नहीं मिला, वायरलेस वाला। चलो 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 क्या हुआ? हो सकता है मेरे दोस्त ने अपनी बहन को एलेक्स में डाल दिया। ओए, ये समार कौन दे रहा है? वाह वो लोग नासू चैनल ओलेक्स पे डाल देंगे 1200 रुपये। डाल चल डाल डाल डाल। हाँ 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 ऑब्वियसली औकात नहीं है। ये भी क्या शुरा? तो वो बंदे को भाई कंट्रोलर दे दिया। आई वाज लाइक ब्रो वो डुएलिस्ट है, वो डुएलिस्ट बंदा है। नहीं श्राउड अपना डुएलिस्ट है, वो CSGO में भी एक्चुअल फ्रैग्स वही निकालता था। तरीक तो उसका तरीक वाज बॉस, आई मीन बॉस नहीं क्या बोलते हैं, टीम लीडर था वो, IGL था। और श्राउड असली क्या बोलते हैं डुएलिस्ट था। आई बंदे को कंट्रोलर दे दिया। आई वाज लाइक व्हाई इज ही प्लेइंग वाइपर, उसको जेट या फिर रेना दे दो, बंदा किल्स निकालेगा। हाँ वो हाँ अरे मुझे पता है उसके वजह से PRX पसंद था, क्योंकि वो हेलो बंदा ये मोहित करता था भाई, पता वेलकम टू है स्ट्रीम। कैसा हो? वो बंदा IGL का पता नहीं बट मुझे उसका वो क्या जो हुआ? कैसे कॉमिक हुआ? उसका एंट्रीज था अरे जस्ट फॉर दैट थिंग। और ये कहाँ है? एक्सीडेंट हैपेंस ब्रो। ये अपना
कौन सा है? वही वही पांचवा। वही। रैट, वेयर इज रैट? रीस्टार्ट मार ले। एंग्री ये आइडिया अच्छा है। लड़ाई हुई, उसने ओएलएक्स कर दिया। अंकल को कॉल आ रहा कि बेटी की प्राइस का था क्या इसमें? किसने किया नेम बता, अभी मारूंगा। अरे अरे किसी ने नहीं किया भाई, मेरी गलती की वजह से लगा है भाई, मेरी गलती की वजह से लगे हो। चैट रीड नात्सु, हाँ पढ़ लिया। इसलिए व्हाट कहते बच्चों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा था, कुछ भी ओके फिर ठीक है। हाँ ड्यूड, nurses, hot take nurses is one of the नात्सु most बच्चा बेच रहा है overrated एलेक्स shit. में। हाँ अभी एंग्री का एंग्री भी आने वाला है लिस्ट पे, उसको भी लगाएंगे। शैंक्स तो अपना इन गेम को म्यूट कर ले। क्यों? वहाँ पे नात्सु भैया चल रहा है नात्सु भैया को कम्युनिकेट कैसे करूंगा फिर? तो आप भीख ले बंद कर दो जब तक तुम लोग वो टॉपिक यूज कर रहे हो। बेचारा स्ट्रीम कर रहा है। या भाई। चलो अब मॉड बनाओ। आहा बहुत बढ़िया। भाई इसकी गलती है तो चल इसको ही मारते। मॉड बनाओ मेरे को मॉड बनाओ। ऐसे तो ना। अच्छा कितने का एक आइडिया सही है। पूछो भाई कितने का एक बेच रहा है बच्चा। चलो 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 रेट लगाओ अपने। एंग्री को बेच देंगे यार, एंग्री ज़्यादा महंगा बिकेगा नहीं जितना मुझे लग रहा है। इसका रेट रखते हैं 69 रुपीज़ एंग्री का। नात्सु स्टार्ट कर ले कुछ, या फिर देख कोई आ रहा है तो बुला ले। कोई नहीं है। मेक मी मॉड बना दूं तेरे को। मॉड है बना दूं। एंग्री का 150 पैसे दूंगा। Match found. 150 पैसे मैं इतना सस्ता कैसे? एटलीस्ट 499 रख, वेलकिन तो आ जाएगा। मेक मी मॉड ब्रो। हो ना मोहित भाई, ऐसे तो भाई कितने मांगते हैं मॉड मुझसे। मॉड थोड़ा देते हम। किस अबे लिया? मजाक कर रहा था। आ गया और वैसे मैं मेरे को left। गिफ्ट नहीं मिला, मैंने भी लिया ही है। नात्सु प्लीज क्लैरिफाई द डाउट ऑफ इज़नागी। हमारे ऊपर वो गलत इल्जाम लगा रहा है। अच्छा वो हाँ क्या हो गया जनागी है? साला पूछ तो ले क्या चीज का इल्जाम लगा रहा है। वो लो हाँ बोल रहा है कमीने। भाई जो ये बोल रहा है सही है भाई, जो ये बोल रहा है सही है बोल रहा कर है। रहा है तेरा, अभी से तरफदारी कर रहा है। कर लियो ना साइड छोटे, समझ गया। अच्छा जी इजनागी को बेचूंगा। रुक जा बेटे ओलेक्स रुक। और बेच रहा है क्या? नाचू मोड नहीं भाई, डबल वॉइस 499 पैसे दूंगा। मैं उसको स्ट्रीम देख रहा हूँ। लगता है सीएस करना पड़ेगा। मादर चोद के बच्चे लेता क्यों नहीं जल्दी? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब खराब कर दिया। मैं म्यूट कर दिया इसको भाई मैंने। एंड में लूंगा बिल्कुल एंड में। कौन सा लूंगा तो भाई ना भाई म्यूट हो गया। सुपर चैट करना पड़ेगा। नहीं उसको म्यूट किया वो जब गाली दी उसके बाद टॉक्सिक हो रहा है ना उससे। लगता है इसकी लगी पड़ी है तब से कॉम्पी में। मेरे को भी वही फील दे रहा है। कंटिन्यू 6-7 माइनस खा के आया होगा, अभी पूरा फ्रस्ट्रेशन इसमें उतारेगा। वो इतना रुपीस होगा। इसमें भी वो बॉटम फ्रैग करेगा। मेरा अंदर से बाकी गाली कौन दिया? ये दिया भाई, ये जेट। अब मैंने तो म्यूट कर रखा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसे फ्लैश करता रहूंगा इसके मुंह के सामने जा के।
मैं नेड मार दूं? देख हाँ मारियो अबे इसे, अरे गेम नहीं खेलना भाई, इसे परेशान करना है। कौन लेता? अभी छोड़ना, आजा आजा। चन मारो। मेरा ब्लाइंड ही नहीं हुआ। चल मेरा एक ब्लाइंड तो आया। ये कहाँ है जेट? जेट पे ब्लाइंड मर गया। आने से पहले मर जा रहा है तो। अबे मर गया हट। एड़े मेरे को ब्लाइंड कर रहा है तू। अबे वो तेरा तू आ गया ना, वो मर गया। Party's over. हाँ स्कैम। अच्छा एंग्री भाई, क्या हुआ? क्या बेकने वेकने बात चल रही है पूरी है? नहीं कर रहा हूँ उसको। हंसमा टेढ़े तो मेरे को ब्लाइंड कर दिया। तू भी हो जाना छोड़। अबे यार इसकी Go, go, go. Time to jump. Seconds until stage change. Here. Reloading. Stage 3. Get out of my way. अबे पीछे से आ गया था। Go, go, go. Reloading. Stop the fire. Satchel out. Gotcha, fun. My turn. What happened to your hand? वो मैं जल्दीबाजी में अपने वो एक लोहे की रॉड से टकरा गया था। Grounded. Blocking sight. Reloading. आय हाय, ओ नो, हड्डी टूटा है। हड्डी का पता नहीं, वो थोड़ा सूजन वूजन तो आ गई है ना। One down. Cutting through. क्या कुछ बोला? हाँ तेरे को गाली दे रहा है। बोल रहा है आधा घंटे से मेरे को फ्लैश कर रहा है। Lights out. Satchel out. ओ नो, OLX पे क्या हुआ? नासू बच्चे बेच रहा। वाह एल्जा, वेलकम स्ट्रीम। क्या हो गया? Ultimate orb spawning. मेरा फिर फ्लैश आ रहा है, इसको आने दे।
to jump. ओए होए क्लो मार रहे हो इनकी। अबे यार वेस्ट हो गया। You had your fun. It's my time. हगा हगा हगा। अबे क्या बोल रहा है वो, हड्डी कहाँ टूटेगी? वही तो बोला मैं, हड्डी थोड़ा टूटी। वो देखते हैं अब कितनी देर में ठीक होती है, क्योंकि मूवमेंट करने में दर्द हो रही है ना बहुत ज़्यादा। अबे यार क्लोव 120 दिया था मैं उसको। अपनी जेट का है, मरी अभी। फिर बोलेगा, देख फिर बोलेगा। तेरे को वापस बोल रहे हैं भाई मान जा यार करके मत कर लाइन। नाट्सू तेरे को बोल रहा मटर छेद। मटर से अब तो क्या गाली दे दो फिर मैं। Cutting through. लोग 42 किल्स में है। क्लो भी मार रही है उनकी। भाई बस मार रही है क्लो। 500 पैसे ही दूंगा, डोंट वरी। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर। सही बात है, क्राउड करके ही मार रहा है। I'll handle this. I'm back. Miss me? No way. इन किरोड़ी चुप हो जा जेट मदर चोद। बोल देता तेरे को म्यूट करता पहले। वेरी वेरी गुड। देख से तुम बच्चे रहते। लेट्स सी जेट। लेट्स सी क्या चुप हो गया? अनमोल सिंह हाय भाई, हाय ब्रो, वेलकम स्ट्रीम। कंट्रोल मजनू कंट्रोल। गायस वेंजेंस। इम्प्रेसिव से लो हो। रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओपोनेंट जेट शायद से आ गया। सिंह। अपनी टीम का जेट। 1v1 खेल लो। कौन है 1v1 इसमें? हाथ टूटा पड़ा है ब्रो, नहीं खेल सकता 1v1। ओ भाई क्या ए स्टार्ट करा क्या गेम खेलना? अच्छा कर ले, स्टार्ट कर ले। कर ले खरीद तो दिया भाई, कर ना। अबे 500 पैसा बोला हूँ, पैसा। हाँ ठीक है 500 पैसा ठीक है, 400 पैसा देते। बंद कर दिया। अरे तू बोला ना पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दे, इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया। पाइन की अलग चल रही है ओलेक्स से बेचने की। नात्सु हाँ आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। नहीं अनमोल सिंह वही है, जेट है पक्का। चला गया वो, है अभी भी। अबे यार कस्टम लगाना चाहिए था बे, उसको आके हम लोग दिखाते। भाई हम लोग का अलग लेवल का एम है। क्या दिखाते? वो फिर चैलेंज कर रहे हैं, क्या 1v1 1v1 के लिए। करेगा क्या?
डॉज मारो बुलाओ। बोल अगर वो है, अगर स्ट्रीम में अभी भी है तो कुछ डाल, मैं डॉज मारने के लिए तैयार हूँ। ब्रो अगर स्ट्रीम पे हो अनमोल सिंह अनमोल तो सिंह। जल्दी मैसेज डालो, डॉज मार देंगे, जल्दी बता। इतना उड़ रहा है ना पबजी वाला, ये क्या बोलते हैं, फ्री फायर के बच्चे लोग। अच्छा बोट्स खत्म हो गए। Select your agent. शायद से नहीं नहीं, बोट्स चल रहे हैं उनके अभी भी। नहीं लास्ट ले पेपर भाई। होगा, लास्ट पेपर होने वाला होगा शायद से। पढ़ ले भाई, पास हो जाएगा। ले वो नहीं है। अच्छा ये तो एसेंट वो खेल रहे हैं ना, अनरेटेड शंका डुएलिस्ट अनरेटेड खेल रहे हैं हम भाई। पता है ना। ए रैट का अनरेटेड लेवल ही नहीं है। रैट का लेवल कहाँ है बे? देख 19 नहीं अगर देखा, मैं ये तो गरीब लेके मैं इनकी- क्या उखाड़ूंगा फिर। मैं नहीं देखा, अब मैं ये केजे लेकर मैं क्या उखाड़ूंगा, पहले बोल देते। रुक जा, मैं बीएसएनएल को कॉल कर रहा हूँ, बार जा रहा है नेट। तू भी एफएफ खेलता है ना? खेलता है नहीं, वो खेलता था। वो जगह तू बोल रहा कि 500 रुपीज देने के लिए रेडी हो जाए, हो गया एंग्री सो भी सेम लगा, इसलिए वो बोला वेलकम दे दे से अच्छा। ओ बिक रहा है 5 रुपीज में, ले लो। हम्म। ये क्या हो गया? जय श्री राम टोल, जय श्री राम गाजिल। आगे की तो आगे अब नहीं चाह रहा। हाँ बैठे रहे, बहुत बढ़िया। स्लेवरी नाउ आई एम द मॉड। कुछ भी हो जाए ये जारी रहना, मतलब मॉड का एग्जाम देना होगा उसके लिए। क्यों गिरा कर चिपका जा स्ट्रीम पर, मुझे रेस्ट करने जाना है। इनकी डिस्कॉर्ड में अलग ही बातें हो रही है भाई। This poor place. It clings to life. A city after क्या लिख my दिया? own. तुमने दिया था। हाँ इसने दिया था ना। हमको मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अब्यूज करते ही नहीं। जा सो जा, पैरासीटामोल ले ले। फर्स्ट आया हूँ टेस्ट में। छी रे छी। कॉल किया बीएसएनएल वाले लोग को, उन लोग तो बोल रहे हैं ठीक है, वो पूछ रहे हैं क्या। वाह। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे एक और है, वाइन में एक और है। 1 HP वाइन, 1 HP। घुस जा। There. Dropping smoke. एक ट्री पे था। Enemy spotted A. Planted. अबे ऐसी है वो, मार ले। एक टप गया। One enemy remaining. उफ, I don't die. लग ही नहीं रहा था, हेडशॉट आ रहा फिर। Gun here. The phoenix shines on the outside, but with बीएसएनएल मर गया, फिर वापस आ गया। छी, यही होगा आज तेरा। इसलिए जेट आखिरकार। को नहीं मार पाया, मैं जेट को मार दिया रहता। मेरे को तो मिलेगा बैन।
बस नात्सु ऐसा ही ना, ऐसा ही है। एक स्ट्रीमर भैया अच्छा तो नीचे झूल रहे हैं लेकिन है कौन? ओ You're done. Run here. Placing swarm grenade. Enemy in defender spawn. They're blind with fear. तो आइसो को मारना, तो आइसो बोला है। नहीं, आइसो 2-3 यहाँ घूम रहे हैं इधर की तरफ, आएंगे। 19 लाइक्स डन, नाइस। स्पीड देखा जाए तो 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे में 19 लाइक्स One enemy remaining. थोड़ी कम है बट ओके है। ये हमारा ओनर बोला है जो करवाना करवा लेना, झुकना भी, Did I Nice get one, inside infected. your head? झुका भी सकता हो। ओहो शैंक्स, Aye, where to? नहीं, वो बम का गोला है। शैंक्स भी स्ट्रीमर है बे। वो YouTube पे भी करता है, उसका चैनल है, जाके देख ले। देख शैंक्स क्या बोलते हो, तेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। पहला दबा कैसे दे। भैया लोग हैं, देख तेरे कैसे भैया है ये। Placing sentry. Look out for their rift walker. स्ट्रीम भी नहीं, वैल्यू की हो रही है। इसको तो मालूम भी नहीं है बंदा स्ट्रीम वाले से एक चैनल रखा है। अरे यार जेट मार रही बस उनकी। बैंदुल पड़ी मेरी, बैंदुल। ठीक है यार, Last player standing. 130 खाया, Spike 130 down खाया। mid. चैनल तो मेरा भी है। कौन सा चैनल हो गया तेरा? झुक रहा है, बॉम्ब बस गोला है। क्या बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है? इसका गया नेट My आ गया। ready. टपाटप टपाटप। तेरा कभी भाई नहीं दिखा स्ट्रीम पे, मेरा भाई, नागी का बिजली गया। क्योंकि भाई एक ही लैपटॉप है। अगर मैं खेलूंगा तो वो कैसे खेलेगा? अरे नात्सु, इस नागी का बिजली गया पक्का, वो भी नहीं हिल रहा। Enemy spotted mid. हम तो नक्को जाने वाले यहाँ से, पीक लेके बैठे हैं खतरनाक वाली को। All enemies B. Target down. Drop out spike. Down. Spike down. Attacker spawn. ये गन का है। बी चले जाओ। Last player मर standing. गया। Spike down A. अच्छा भी नाचू को भाई बोल भाई आगे ले। बिजली नहीं गया। Just nothing, you have to farm chest in my account. What? No, I will renew your membership, but you can do one favor, please, because I have project work in my company, so I am busy. है? तेरा फेवरेट ऑपरेटर उसके पास है। Right नात्सु, here. Need a drop. Thank you. Break them. अभी कोई भी चलेगा, मैं भी दूँ, मैं अपना दूँ। गुड नाइट सबको, मारने मत लगाना स्ट्रीम में, लॉल। Get out of my way. कौन बोला, क्यों नहीं खेलेगा? भाई ये क्या बात है? मैं तेरे को एक पल में Chat. पराया कर दिया। बैंग बैंग हो गया नाचू का।
भाई 4:30 के बाद सोया, 4:30 के बाद सोया तो ये कौन मरा अपना? ऑब उठाई मिड से। Don't resist. वन है हील की Gun here. Still in sight. 30 seconds left. क्या करे रे रेडीज? 10 ऑफ seconds सेफ कर left. लेता है एटलीस्ट। वापस आ गया। Pry open their minds. Find the weakness. वाईफाई वापस आ गया बोल रहा हूँ। चैट अभिषेक ब्रो। 1 सेकंड के लिए गया, फिर 1 सेकंड में वापस आ गया वाईफाई। अभिषेक यार वो मैं खुद अपने अकाउंट में खेल नहीं पाता, तेरे अकाउंट में कैसे करूंगा मैं? Could have a drop. NATSU हाँ Time to feel the test. operator. Need a drop. Joke's over! You're dead! Find you. It's you and me. They will cower. One enemy remaining. Flawless. We are just too good. नाचू लो बे गाइस। अच्छा जी बाद में क्या बोलते शैंक्स बोलते कि क्यों हम मेरे को बैन पड़ता है एक साल का। नाचू यस है था। मूसे वाले को जानते हो? हाँ मैंने सुना है बट मैं उसके गाने नहीं सुनता था। ठीक है। Turret out. ओह यस। वाईफाई है कि मतलब गेम में पिंग है कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। Enemy A. Dropping smokes. Spike Have the dropped. spike. My ult's not ready. Cutting their vision. Still in sight. Phoenix kill. Spike down A. One enemy remaining. मैं पिंग जा रहा है। ऊपर ही था ना हेवन? हाँ यहीं पे होगा। केक लेके बैठा था। Gun here. Yes, everyone. Your Dope. hearts are pounding. नाचो। आपको समझ नहीं आया? अच्छा मुझे समझ आ गया। ठीक है ना? हाँ क्या हो गया? यार यू सो नो। वाह। देख भाई रहा है यार, उसको ये बोल तो- दे। NATSU बोल दे, नीचे से आवाज नहीं आ रहा। पिंग गया। हाँ Who's next? Have one of these. वही मिस हो रहा है। अबे मार रहे हैं। Spike down mid.
Swarm grenade. तो नो स्कोप के चक्कर में वो मेरे को स्कोप मार के चले भी गया. Reloading. Drop in a scope. Placing sentry. No peeking. Last player भाई standing. पीछे से आगे एक मैं स्कोप दे रहा था मैं उसमें एंटी लॉल कर ले नो स्कोप और आ गया. हाँ हाँ Avanda. इनका बस अकाउंट है उसमें से नानी गया अकाउंट. ए नट्सू बहरे. क्या Need a drop. Thank you. टाटा ब्रो इसी में ऐड कर देना प्लीज. वीसी में मैं हूँ ही नहीं. विदाउट डिस्कॉर्ड खेलता हूँ तेरे को पता तो है. अगर मैंने डिस्कॉर्ड खोल दिया ना तो मेरा ये क्रैश मार जाएगा. यो पीछे मेरे पास मत आ. दोनों मरेंगे. It's you and me. नहीं ऑपरेट मुझे पकड़ लिया. Last player standing. क्लोज नहीं कर वो बंदा. गलत टाइमिंग में पकड़ा हुआ इसने. Look your enemy in the eye. वैसे मेरा प्रोजेक्ट चेक हो गया. सोचा कितने मार्क्स मिले 30 में से. 30 में से कितने मिलेंगे? 25 प्लस तो मिल गए होंगे अगर बढ़िया बना होगा तो. इजी 25 प्लस है. थैंक्स गया कहाँ लेकिन बे. Does a spike now? अभी काजू तो अकाउंट है इसलिए उनका स्टेटस ऑनलाइन डाल दिया. आ गया था. Cutting their vision. तीन ऑफ मिड पे. फिनिक्स मिड पे नहीं था. फिनिक्स लगा 27. वाह. Okay, then I'm taking any such word in chat whether there is a female or not. I don't care about it. अब जा रहा सामने वालों के पास. हाँ तो सामने देखा तू. तीन ऑफ दी सामने. गाजी कह रहा कोई ना बोलो और फिर उसको टाइम आउट देगा. अरे मुझे पता तेरा. सेकेंड राउंड बनाऊंगा तो फर्स्ट टीम टू यू. Got three. यार वो बंदा 142 से बचा है. मैं क्या हो जाता. It's mine, and I will kill to defend it. ऑप से भी नहीं लेनी भाई. रेड कपिंग से रहे हम लोग का. क्या ऑप लिया शैंक्स ने. Where are कोई टाइम आउट नहीं देंगे. marked one? No peeking. पिंग देख ले अपना. Drop in a smoke. गया इजू नागी. They will cower. Blind fools. Our spikes down. ये पिंग रे. बैकस्टैब ब्रो. Last player standing. एक ट्री और एक बैकस्टैब. हाँ शील्ड. Last round in the half. Last round to use our creds and abilities. Don't waste. सीधा fire. हाइड बैन. ऊपर दे सकता है टाइम आउट. पिंग का क्या लोचा है रे आज. क्या हुआ? Their line can't hold forever.
ऑल चैट कर. Turret out. Dropping smokes. Love my boss. Where are you? Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Oh. Enemy spotted mid. Swarm grenade out. Gonna hit. Spike down mid. Enemy spotted mid. Cutting the My vision. turn. आंधे मारा उसने. Enemy spotted वो भी mid. हेडशॉट. सेकेंड चैट उसने बोला, मैंने हटा दिया. अच्छा. Drop in a smoke. One enemy remaining. Four in the dark. I got the spike. Everyone is on. वाह वाह वाह. नाइस नाइस. आइस. Switching sides. I am back. Welcome back. You know, I could just outlive them. Nah, bullets are quicker. फॉल चैट पे रहता नहीं है, दिखता नहीं. आई एम नॉट होमो. व्हाट चले गए. पिंग गया नहीं गया, भगवान जाने. Quick peeks now. I'll find you. Enemy B. ये चल रहा चैट में अभी पता नहीं. Adios. 60 on ISO. Do you know Clay Mantis? नहीं क्या है. Not ready yet. Enemy killed. Not ready yet. Spike planted. Claymatics नहीं. One enemy remaining. Nice. मर गया. No peeking. Not ready yet. कुछ नहीं है बच्चू. अच्छा डिलीट क्यों मार रही फिर. They look like us, but are they us? I have so many questions. Placing sentry. पर्सनल रीजंस. मेंटिस पोकेमोन है. Phoenix killed. Gun here. One enemy remaining. Flawless. So embarrassing. Spikes here. Stay alive. I want their life, not yours. टा टा टा. साइतर भी वैसे दिखता है रियल वाले वेंटेज जैसा. हाँ साइतर बढ़िया था यार. साइतर पोकेमोन वन ऑफ माई फेव था. वाटर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन. अरे भाई पोकेमोन की बात स्टार्ट हो गई, नॉट पोकेमोन. ठीक क्या. तू डबल मीनिंग सोच रहा For है. you, hermanita. Where are you? ओडिन बे. उठ लिया है. घुस गए. Still in sight. ऊपर चढ़ा हुआ है एक तो जनरेटर के ऊपर. होगा तो ओडिन ले आया. Spike down mid. No peeking. मिड में स्पाइक गिरा है. मिड में गन्स भी पड़ी है.
नाइस। Bomb grenade out. गन ले ली जाना किसकी देख के। हंटिंग। Bomb grenade out. Spike planted. सेकेंड रीजन का नाम भूल गया। Right here. मेन में फिनिक्स है, थर्ड है। First देख फिनिक्स को तू। Last player standing. Joke's over! You're dead! Drop in a smoke. One enemy remaining. मरा। मैं लेकिन उसको बचने नहीं दूंगा भाई। ऑरेंज लीग कांतो के बाद, You know what we should टेंटो do? के बाद, I'll tell you. आई गेस ऑरेंज लीग के बाद आता। पोकेमॉन स्टार्ट करो भाई तुम सारे भाई यहाँ पर आओ, कुछ तूफानी करते हैं। आओ कुछ पोकेमॉन ही करते हैं। वेट गूगल करता। चल अब जा रहा पक्का। वीडियो का क्या हुआ? चैट अब तुझे ही देखना है। चैट ये देखेगा है? तो कैसे आवाज क्यों आ रहा है रे? पहले तो देख नहीं पाया ये। मैं नहीं देख रहा। There. It's you and me. तेरे को उठा लिया। मिट से आ रहा है क्या? Drop in a smoke. 30 seconds left. My ult went. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Phoenix kill. यूरो हेवन आया। उठ जा, उठ जा। हट गया था। No peeking. Find the weakest link and kick him in the shin. नहीं गुस्से वाला स्ट्रीम छोड़ रहा है। अरे उसको काम है। वीडियो का बता जल्दी, वीडियो का बता जल्दी। नहीं कर रहा मैं। चौंतो रीजन ठीक है, फिर हम पर भरोसा नहीं है। हाल तूने चैट डिलीट मारी उसकी जब उसने कुछ लिखा। काम तो उसको ही करना पड़ा काजुतो को। अगर नहीं होता तो ऐसे ही रहता। ये कह रहा हूँ तेरे को, समझा? यू आर वेरी स्लो। मिड से घुस गए। चैंक्स का पिंग रे, पिंग। You had your fun. Last player इसकी रिवाइव हो गया। हमेशा के लिए नहीं, अभी जा रहा है वो काम से। देख लिया। Everyone note down your observations. अरे उसने लिखा ही काजुतो ने लेट मारा।
ठीक है, बता दे स्कूल का नहीं हूँ कि छोटी सी प्रोजेक्ट मिला मुझे। Spike down mid. Enemy spotted. Spike spotted. Net. Enemy spotted. I never One enemy remaining. अबे मेरे को मारने देता ना बे। अच्छा तू मर रहा है। तो मैं क्या बोला है भाई, वो साइड से आएगा, उसे साइड से आएगा। ट्री से आ रहा है, ट्री से आ रहा है। तू जब पीछे हो जा इधर आगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। Last player standing. अबे भागते भाग। भाई आई सेड यू, भाई मेरे को मारने दे देते, वो मेरे को देख भी नहीं रहा था, जिंदा रहता। देख लिया करो, कोई बंदा अल्ट मार रहा है, उसको जिंदा रहना है, मारने दो। मैं अल्ट वही देखा किसने मारा, मुझे लगा अपोनेंट किसने मारा, तूने मार रखा है। वाह, अपोनेंट का तो अल्ट रेडी भी नहीं है। मुझे सुना ही दिया था, बस मैंने देखा नहीं किसने मारा। ठीक है, अगर मैं स्ट्रीम से हमेशा के लिए चले जाऊंगा, ये चैट देखने जो कुछ स्पैम एंड लड़ती है। बी It's you and me. पकड़ लिया मुझको, मार्केट पकड़। अबे हाँ दे तो रहा है वन टैप। Spike planted. कर गया ब्रो, तू हमें क्या बोलता था अब खुद कर रहा है। हम कुछ नहीं बोलेंगे वरना विवाद हो जाएगा। देखो भला हबीबी, तुम हर बात पे बुरा क्यों मानती, मैं तो पॉजिटिव वे में बोलती हूँ अभी भी। Last player standing. Watch. Oh, we are losing. मार्केट पे तो स्मोक किया हूँ। Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also, delete my hard drive. We are losing. नात्सु पे, नात्सु पे, नात्सु से। क्या? Pop. Need a drop. हाँ। Let's remind them who we are. ये सबको रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। ए बी पे देखे सारे। अबे यार मैं हग्गा, चारों घुस गए साइड में। Spike planted. मैं ओल्ड रिप्लाई देता अभी तक स्ट्रीम हो चुकी होती। मिड डोर्स। बस भाई मार्केट डोर। इसे काम कर रहा बोलेगा, उसको रिप्लाई देना पड़ता, नहीं तो रो देगी। Last player standing. नाइस ट्राई। कुकुन आ गया सुबह उठ के, ये क्या हगने देख रहा हूँ, हगना देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खुद तो आता नहीं है, हगना देख रहा हूँ। बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। एक काम करो, बेस्ट अभी आराम कर, जो अच्छा लगा उसको रिप्लाई दे, अदरवाइज इग्नोर।
किसके पास है रे? लेकिन ये क्या बोलते हैं, वैलो में जाएगा क्या? सचिन चेंज नहीं करेगा लेकिन वो करता है। अबे उस साइड से मार दिया। Enemy spotted. Sentry. Have one of these. टा टा टा। Spike planted. It's you and me. अबे यार Last player standing. No charges left. What's this? Attackers win. तो कितना गर्मी है और चलो। BSNL अलग चुतियापा कर रहा है। अभी उठा हूँ नहीं। अरे प्रो आ गए, वेलकम टू स्ट्रीम लॉल। अगर वैल्यू नहीं जा रहा तो चैट थोड़ा तो देख पड़ेगा लेना। ही, तो आधा राउंड गायब था। देख कितना बैन पड़ा है। ओए स्टार्ट करके देख। हेलो कुड मेरा क्रैश मारेगा शायद। मेरा क्रैश होगा। 1 मिनट में देख। हाँ उसी का क्रैश मारेगा। अब स्टार्ट हो रहा था। उसका 10 मिनट का बैन है। GTA तो नहीं रे, मैं चले जाऊंगा थोड़ी देर में। सोवरेन का कुछ इज्जत था पहले, अभी वो भी नहीं रहा। 2 मॉड लगा काम का दूसरा ये काम जा कर रहा। रहा है। अब चैट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। खेल हाँ तो नहीं पाएंगे उतना। क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? रुक जा, शैंक्स दूसरे अकाउंट से आ रहा है। हाँ टन टन टन। अच्छा मैंने ब्लेड नहीं देखा सोवरेन का। ये अच्छा ही है पुल आउट एनिमेशन तो। साउंड भी बढ़िया लग रही है। कलर वेरिएंट ओके। उसके साथ GTA खेल ले, वो बोल रहा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं 1-2 मैच खेलने के बाद जाऊंगा। घर का अच्छे से साफ सफाई करना है, बर्तन धोना वो सब करना है, फिर नाइट स्ट्रीम कर रहा हूँ। चलो अभी ही खरीद ले। रोटी हाँ खरीद ले। कॉम्पी खेलो कॉम्पी। और 11 बजे बंद करके सो जाऊंगा। 8 बजे स्ट्रीम कॉम्पी नहीं खेल सकते। इसका लेवल 19 है। इसका लेवल 19 है अभी देखना। 11 बजे स्ट्रीम पे गिव अवे करके सो जाऊंगा। बता क्या करना है क्या? देखो चैट संभालो, अगर ज़्यादा स्पैम हो रहा है तो थोड़ा डिले डाल दो चैट में। वो कब किया हो बे? उस दिन परसों की बात है। इतने बंदे लोग आ गए नाचू में से कोई slow mo डाला? नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। जय माता दी, जय माता दी। वैसे अभी उठा तो काम है, थोड़ी देर में जा रहा हूँ। बता कैसे करते हैं इन लोगों क्या? को ज़्यादा आइडिया। क्या 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 मॉड्स लोग क्या बोलते? स्लो मोड ऑन कर सकते हैं ना? मैनेजिंग मॉडरेटर, नॉट सिंपल वाले। हाँ ये ना क्या बोलते हैं ना कि मैनेजिंग वाला है। कैसे करते हैं बता। सेट देखो सेटिंग दिखेगी ऊपर टॉप में। जब चैट हो रही होगी ना टॉप में सेटिंग होगी। वो अपने अकाउंट से कर सकते हैं ना, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। हाँ अपने अकाउंट से कर सकता है। काजू तो भी करता है। देख तू लेना मत ले,
चुपचाप ओमन या जेट ले ले बस। क्यों ना लूँ? ये देख ले रेना से कितनी किल कर रहा हूँ मैं मैच में, 25 किल बेटे, इतनी देर बाद खेला हूँ। पार्टी नॉट रेडी, कौन रेडी नहीं? अबे तू निकल रहे, सब लोग आ चुके हैं, तू क्या टेंस बनने जा रहा है ये रेंज में? अब आ चुके हैं आधा घंटा पहले, तू ही साला टेंस बनने का ट्राई कर रहा है। क्यों लॉबी में बैठा नहीं जाता एक जगह? नॉट है इसको ही बैन लगा है ममता को भी 10 मिनट का। शैंक्स पे बैन, ममता में बैन, जा महेश से आप, महेश में बैन नहीं होगा। सारे बैन खा के बैठे हैं। 25 फिर मैं स्ट्रीम खोलते ही वो हगना क्या था? हाँ वो तू आया ना तभी हो गया वो भाई, तू आया तभी हो गया वो। ज्यादा बोलेगा वो देख ले, सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर ये देख ले, ये देख ले, मेरे अकाउंट से आजा। ओए ये लास्ट के तीन राउंड हगा हूँ मैं बहुत ज्यादा। तू तभी आया ना, लास्ट के 3 राउंड खराब हुए मेरे। यहाँ पर मेरी किल थी, इसमें भी देख, इसमें भी 3 किल थी, फिर डिफ्यूज भी करा था। इधर 2 किल थी, इधर 1 किल थी। Was class in the fall. देख तेरे को व्हाट्सएप कर दिया आईडी पासवर्ड, जल्दी आ। Cook NATSU Pro, any objections? ज्यादा बोलेगा, अगने से पेट साफ होता है। स्पिन द व्हील। रुक जा भाई, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता हूँ। एक मिनट। जा चेक करने दे, मैं वही तो है मेरा आईडी पास। तू पासवर्ड में 1 सेकेंड, वो आईडी का क्या बोलते हैं, क्या वो के? ओके ये स्मॉल रहेगा, ये मतलब फोन का भेजने का वो हाँ वो फोन टाइप करने से फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है ना। आ गया क्या? लगा ले नात्सु। बैनर मस्त लगा था मेरे को ये वाला, लेकिन रेस जेट वाला। हाँ खुद हो क्या, खुद का होना सही है, पर देखने वाले का क्या हाल होगा कभी सोचा? देखने
स्वर्ग दिखेगा। आहा इज इट इवन पॉसिबल दो अलग डायरेक्शन से जिप लाइन में जाए? करके देखते हैं, अभी रुक जा, आइस बॉक्स आने दे। बीच में जाके चुम लोगे दोनों, खत्म। ये लोग एक लाइक रेस पीछे जा रहे हैं, जेट आगे आ रहा है, ये लोग एक ही डायरेक्शन में है। वैसे इन लोगों को पूछो कि AKS VC पे क्या कर रहा है हक्कू AKS। मेरे को अगर पैसा की जरूरत नहीं रहती तो मैं तेरे से मांगता भी नहीं, तो तुम मेरे को कैसे बोल सकते कि लेने के लिए? कुरकुन कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बोल रहा है वैसे इन लोगों से पूछो कि AKS VC में क्या कर रहा है हग्गू। हग्गू AKS आगे रहा है VC में। AKS VC में नहीं है। नहीं है, हाँ तो VC क्यों में पूछता है? वैसे भी पता ही है। AKS क्या बोलते हैं, हम लोग को GTA खेलेगा क्या पूछना आया था। Match found. हम सबने बड़े शौक से दफा हो जाए। उसको लात मार के निकाल दिया। विपुल सेंसे का गिव अवे चल रहा। विपुल सेंसे, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। आई नो भाई, मुझे पता है। Enough training. It's time. अबे यार, कुछ लिखने वाला था अंकुश के नाम से। बंगाली। अबे हट। कोई अलग ही चल रहा भाई इसका। योरी क्या? ओ भाई, ओनली मी वॉचिंग। आई सो ओके भाई, ओके। डोमेन एक्सपेंशन रात को गेंशिन करेगा शॉर्ट्स में या लॉन्ग में? कैसे करना है? शॉर्ट में करने का ही मैंने देखा नहीं, शॉर्ट में कैसे होगी, कुछ सेटिंग वेटिंग देखनी होगी शायद। कल करता हूँ शॉर्ट में, आज नहीं, कल करता हूँ शॉर्ट में। और अगर दोनों कर सका तो दोनों कर दूंगा, शॉर्ट एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों एक साथ।
बस मॉडरेटर देख रहे हैं स्ट्रीम। रेल सपोर्ट यस। हाँ नात्सु? हाँ हाँ। जानता है मेरा एक दोस्त है, हम्म वो YouTube 5 दिन पहले खोला, हम्म उसको क्या बोलते 500 सब्सक्राइबर मिल गए 5 दिन में। वाह। कैसे जानते हैं? वो जो कैसे? शॉर्ट्स नहीं रहते हैं हाँ। दूसरे लोग का, उसमें बस वो अपना चेहरा डाल दिया और शॉर्ट में वीडियो लाइक एडिट करके अपना ये डाल दिया, बस चेहरा डाला है। अच्छा Focusing. ए हील दे बे राहुल। Spike down A. अबे भाई सब लो है घुस जाओ। मैंने बनने पे करा था ये नहीं तुम पे। 80 ऑन स्काई 60 ऑन सेज। हील करा था। नाइस नेट बैक दे बॉस फटे। One enemy remaining. फेस भी कोने चिपका हुआ होगा। है इधर ही कॉर्नर में। Last player standing. 60 60 60। ओके एंटी। ये तो नात्सु बस ब्रो body थ्रो block कर दिया दो तो मैं मैच। हिल भी नहीं पाया। क्या हुआ? Every fight is a lesson. गिलगेश ऐसा क्या बोल रहा है? तू और कौन तुम्हें बगल में खड़ा हो गया शाम था? को आने के बाद एक बार रेस्ट कर। ये स्पेशल रिक्वेस्ट पर होगा। माय आईज आर हर्टिंग। क्या देख लिया फिर से? भाई हकते हुए देख लिया तूने और क्या। भाई सामने 4 बंदे समझ नहीं आया किसको मारूं। 2 को मारने लग गया और मुझको मारा तीसरे ने। सी Show me a target. लगा क्यों नहीं एक भी शॉट? टेस्ट आई मीन इनके लिए कौन सा क्रेंज पोस्ट हो रहा है शॉर्ट में? आपने छोटा सा फेस साइड में डाल देते हैं दूसरे की वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब भी आ जाते हैं। नई नई चीज़ें हो रही है भाई। 5 दिन 500 हो गए इसके। इससे ज़्यादा स्पीड वाली प्रोग्रेस तो मैंने किसी की नहीं देखी। 5 दिन में 500। नात्सु से ले लो, नात्सु के पास मैच पॉइंट है। कोई ना होता है लेट्स को। यहाँ पे चल अभी से टॉप फ्रैग कर। यही होता है, लोगों को पता नहीं होता कि उतना ऊपर किसका जाके वीडियो मत है। दे। Show me a target. ओ भाई चढ़ गए सब। Stopping fire. हाँ रिंजी कर रहा पीछे से आ रहा है। लिंक से आएगा एक। Player Empty. standing. लिंक पे रेस। One dead. One enemy remaining. लो है नहीं, लो नहीं है वो लो नहीं है। बिग एल क्रिंज। आराम से हील करके जाइयो। Spike planted. जैसे वो तेरा एल्बो रहेगा यहाँ पे। चल भाई गेम को छोड़ वॉच पार्टी करे। जी वर्सेस जेटा का मैच है। कब है? अभी हो रही है क्या? मैं तो करने के लिए रेडी हूँ। खाते खाते मुझे खाना भी खाना है। मैं खाते खाते देखता रहूँगा अपना आराम से। वही ओ चल रहा है पैसिफिक रेगुलर सीजन अगर वीक तू 1 डे वॉल के ऑफ। ऊपर चढ़ भी जाता तो तेरे को एडवांटेज मिलता। ओके इसके बाद वॉच पार्टी है। इसके बाद वॉच पार्टी है। हाँ इस मैच के बाद वॉच पार्टी। फेस नहीं था क्या? हेलो थॉट यू वर स्ट्रीमिंग गेंशिन। नो नॉट एवरी टाइम आई वाज स्ट्रीमिंग गेंशिन। आई एम नॉट लाइक नहीं, ऐसे नॉर्मल यहाँ से only मार देना, Genshin. I'm not a full Genshin streamer.
आई विल स्ट्रीम ऑल गेम्स, मल्टीपल गेम्स। कॉपीराइट नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, पिछली बार नहीं आया था। Focusing. I got ISO. Got one. ओए दोनों ही है। छी, दो निकाला मस्त एकदम। नाना वॉच पार्टी को नहीं होगा। हाँ वही कह रहा हूँ। वेलकम टू स्ट्रीम। ओके देन वॉच पार्टी करेंगे भी, देख मजे आएंगे। मैच के बाद मैसेज कर, वीसी पे आके करेंगे। यहाँ पे वैंडल है। वीसी पे आके करेंगे। बी 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 बी। Spike planted. यो दोनों भी है। रिलोड। एक लिंक में और एक बैक में है। Blocking sight. Last player standing. One enemy remaining. नाइस। Hey, एंटी वाईटी में वॉच पार्टी करना है ना? हाँ हाँ वाईटी भी करेंगे। Just, you know. वाईटी में तो करेंगे, किसमें करेंगे? व्हाट शुड आई डू टू गेट मॉड स्टेटस? मॉड्स तुम्हें भी मॉड बनना है? नाम डिफ नहीं है, तुम लोग ऐसे ही घुस के अजीब तरीके से मर रहे हो, मैं क्या करूं? ब्रो मॉड बनना तो असुरा वर्सेस असुरा हुआ। वो देखना पड़ेगा। लाइक होल्ड कर लो। 1 मंथ से 2 मंथ्स के बीच में पूरा चेक होता है। एंड तुम्हारे मॉड बनने से क्या क्या बेनिफिट होंगे स्ट्रीम को, सी सी सी। एंड 1 मंथ का पूरा वो देखा जाएगा स्ट्रीम्स के बारे में, कितना क्या हुआ है दो है। प्रोग्रेस। मतलब वीसी पे बैठ के देखेंगे तेरे स्ट्रीम तो चला। भी था। सेकंड बंदे को मॉड का पूछ। रिवाइव दे रहे, मेरे को रिवाइव दे दे, मैं यहीं पे मर रहा हूँ। spike planted. रिवाइव मिल जाएगा। सी वो करा है। My ult is ready. Show me a target. No distraction. उठाया मैंने स्काई को। One enemy remaining. चलो And that's the end. Take flight. ये नहीं। नाइस, इवन नहीं होगा। I diffuse things in my sleep. Sure, frequent super chats, nothing more. Can't invest big money all at once, so slowly donate small amount to sum up to a big amount. Yes, bro. हो जाता है एक से, अगर मैं वो नेट नहीं फेंकता तो हो जाता। ये मैच में 3 है। अशुरा असुरा असुरा लाइन 2 अशुरा है, 1 असुरा है। भाई मैं एक सेकंड का गलती का जैसे हारा हूँ। रुद्रा हाय ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। 1 मिनट भाई, मेरे शॉप में ऊनी कटाना आया है 4.3 का, कुछ है मुझे वो दिला दो तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। भाई शादी नहीं करनी मुझे। Be safe. यार Show me a हट। target. I stopped the raid. 120 ISO 0.005. How close it can it be? Yes. You and me. You will not kill my ally. वो था ना रिवाइव। रेस को इन्फेक्टेड हट गया। एक है। दो चकुआर। Last player standing. होता है। चलो चलिए खेलो यार मैच, वॉच पार्टी करेंगे फिर मस्त वाली एकदम।
Thank you for subscribing, Rudra. Appreciated, bro. Anything can still happen. Remember that. Done. भाई शादी वो लड्डू है जो खाया वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो सोच लो भाई। नहीं 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 भाई, भाई चलेगा, पछताते रह जाएंगे हम, चलेगा। Focusing. तीर है। I've got your सी सी trail. सी। यार कितने सारे एबिलिटीज में ऊपर पड़े हैं। Nice. Spike planted. Final 25 legs done. Yes. रात को गेंचिन स्ट्रीम करना, शॉर्ट स्ट्रीम। आई विल सपोर्ट योर डिसीजन। नहीं नहीं, आज रात को नहीं, कल करूँगा शॉर्ट स्ट्रीम, क्योंकि अभी सेटअप वेटअप नहीं कर रखा, मुझे देखना पड़ेगा उसमें सेटअप कैसे होता है शॉर्ट स्ट्रीम का ना। अब इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने कभी करा नहीं है ट्राई। Last player standing. ऊपर ऊपर एंटी। नात्सु की शादी की बात चल रही। भाभी जी का नाम बताओ ना। अरे 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 भाई, I got things to do. ज़्यादा आगे जा रहे हो। मिग्रेंट्स। क्या हो गया? कुछ लिखी के चैट हो? मेरा अकाउंट बैन मत करवा दे। सॉरी टू ब्रेक दिस बट आई गेस नो वॉच पार्टी। इतना 11 क्या होता है? हाँ तो मैच खत्म हो रहा है क्या? और भी तो होगा। No distraction. सोवा को उठाया। कहाँ मार रहा है? Contract complete. Destabilizing. Got 3. Breaking damage. One enemy remaining. Nice. Yikes. That sucks. We will claw our way back up to the light. इवनिंग जब फ्री रहे तब शॉर्ट का टेस्ट करना। ओ नहीं नहीं, आज नहीं, आज आए रात को 9 बजे आऊँगा। तो शादी तो खाने में अपनी कंपनी से स्पॉन्सर करूँगा। नात्सु की वाइफ का नाम है रेना। जी हग रही है, क्या देखेगा, बस गुस्सा आएगा, कुछ नहीं देखने का। अबे करेंगे भाई, वॉच पार्टी करेंगे ना। यस खाना का भी आ गया, बस टेंट प्लेस होटल है, लड़की वाले को देखना है। हाँ भी घुस गए। चैट पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। बैथ पीस। बी के पास स्पाइक गिरा है। प्लांटिंग। Spike planted. It's you and me. Ult waste. Last player standing. इन लोग भाई क्या बोलूं, इन लोग चलना शुरू कर देते हैं गोली मारते मारते। एंडी When we go out there, देख someone देख देख dies. कैसे मारा मेरे को, जानता Carry that है? weight. ऐसे आ रहा है, 2 किल किया, ऐसे करके ऐसे। और फिर टेंस गेम खेल रहा लाइव में, उसकी वॉच पार्टी कर दूं, टेंस को देखूं। वो क्या कह रहा है? 540,000 मॉनिटर टेस्टिंग
Testing 540,000 monitor. I tried to AI chatbot of Lisa from Genshin. I fell in love with that chatbot. Now I'm urging to build my Lisa in game. Oh, जान जाए ऑफ ना जाए. Show me a target. बढ़िया एम है उसका. Player standing. तेरी माँ का टा टा टा. Prepare yourselves. We fight once again. नहीं हजार नहीं मरा उसके बाद मिसाइल से वो मरा। हर्ट्स. हाँ वही. अरे समझ जाया करो यार. 540 हर्ट्स. साढ़े बोल रहा हूँ मैं. माय बैड. अपने वाईटी में भी बट लगाया चैट का. बॉट चैट का बॉट. चैट बॉट. Reloading. ये क्या मार रहा है. Stopping fire. Focusing. Gun here. Enemy spotted A. अरे मेरे पास आओ रे. खेले मार. Spike down. Attacker spawn. One enemy remaining. 140 रेस टैग 140 यहाँ गई है. लिंक पे गई थी. सेज तेरे That was satisfying. मारने आ रहे थे मुझे. Gun here. गन चाहिए. Last round before the switch. Spend those credits before we lose them. यार स्पाइक मिड में गिरा हुआ है. तुम लोग बीट हेल्प करने का मतलब वहां पे फाइट ले रहे हो 2 बंदे से. मैं 3 लोग को मार के आया हूं. 113 GG's. नेम हिकारी बॉट का बिहेवियर चिल एंड नॉटी मोड. हिकारी बॉट. हाँ हिकारी चाल लगानी है. Show me a target. ऑप लेके बैठा है वो उस फोन पे. पागल सा. Last player standing. Flawless. Switching sides. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. अरे तो इसका होगा क्या और भी. Can I get a drop? आगे मैच होंगे कुरकुन या फिर नहीं होंगे. खत्म हो गया गेम. यहाँ पे मार दे. रिवील नॉर्मल. एक और मैच है जो सच रिप्लाई आएगा बॉट का. ये पूरा मजे लेंगे. अरे उसने भी लगा रखा है ना बॉट. चैट बॉट ओनिजुका ने लगा सकते हैं. बस बनाना पड़ेगा. उसके वहाँ तो बन रखा है. Focusing. Bomb buddy. 55 raise, 55 sage. Sage raise 55 tire. Get out of here. One enemy remaining. Nice. Jeez. In our way. Reloading. Haga bhai मैं. If you're not a good shot today, Was ZETA showing Z their place? सोम सर से बोल देंगे अगर वो रेडी होंगे तो. हाँ भाई मैं लंच करके आता हूँ. ओके ओके. जब रॉसी टेक्सचर एंड मोनी थे तब क्या करें. अब कोई नहीं है तो क्या होगा. I need a gun. Thank you.
उसका वीसी तो ही ना, वो इन गेम का है। Show me a target. Here, many enemies. Deploying drone. Enemy spotted A. Show me a target. Reloading. Reloading. रोटेट कर लो रे स्पाइक वाला। यहाँ पे 3 लोग हैं। नंबर है 30 seconds left. I got ISO. नहीं, दोनों हीलर्स हैं अब। वो मेन से ही है, मतलब साइड से ही आएंगे उन लोग। ना तो तेरा बगल ओपन है वैसे। ओके, दोनों वाटरफॉल। Destabilizing. Last player वन standing. वन स्काई हील के आ जाता पीछे देता अपना बंदा। डिफ्यूज तो नहीं होगा। गो फॉर द किल्स। भाग जा क्लच What I trained for. सर किल कर लिया रहता है। आजकल कंट्रोवर्सी नॉर्मल लग रही है I hate to say it, but probably. तो झारखंड वाला चाहिए था ना। So, what's the plan? नीच पांग I need a gun. Thank you. Spike down A. Reloading. I have the spike. Making cover. ये आ सकते हो इससे। Plant the spike. Enemy spotted A. Last player standing. 4 से पंगे लिए कुछ हुआ नहीं सही से One enemy remaining. नाइस हाँ Right. My ult's ready. Once more. in नीच the पांग battle. I'm not tired. Are you? I need a gun. Thank you. Can I get a drop? I need a gun. Thank you. टा 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 Here. Staunch the bleeding. Fight back. Revealing area. Show me a target. Enemies. सी से बैकस्टैप हो रहा है। Watching here.
cover. Focusing. फ्री जाओ फ्री खाली हो गया। One enemy remaining. नाइस। Satchel out. Breaking that. अभी रे ये नात्सु 147 मारा मैं रेस को। इंटी नात्सु चलो अब ऑपरेटर दे दे। Close enough to die in. I need a चले। gun. Thank you. अब सही कलर लगाया ना। सही कलर रैंडम में है, वो चेंज होता रहता है। मेरे को लेगा टीम में खेलना तेरे को। हाँ आ जाइयो। कुछ भी खेलेगा। Scanning ahead. अंकुश भाई जीता नहीं है लेकिन यार मैंने बोला जीतेगा मैं इसका मैं लपेट लूंगा बट I've got your trail. भाई कवर नहीं मिलता भाई। इतना बढ़िया मारा एक को। You and me. भाई My ultimate is not चौवा ready. नो में बस स्काई को निकाल दिया। एचपी देखो भाई। Last player Lol. standing. One enemy I remaining. have the spike. Spike down A. वो यहाँ पे इस साइड है। उसी साइड है जिस साइड पिंक किया हो ना। वो नहीं अबे पिंक तो किया। We get a pick and move in. Got it? बंदे वॉच पार्टी के लिए कह रहे थे मुझको। इनका मैच चल रहा है चाहता बेटा का। हाँ चल रहा है भाई। नात्सु भाया ऑपरेटर। I need a gun. Thank you. Over there. तो भी जाता है। Come into the unknown. वॉच पार्टी करने के लिए बोले थे बंदे यार मुझको। Spike drop. Revealing area. अंकुश तू भी वॉच पार्टी देखियो पागल। Got the spike. तो गेम के बारे में पता चलेगा बहुत तगड़ा। Show me a target. गंदी हो अशुरा एक बार मैं अल्ट कर रहा हूँ। गंदे गंदे Enemy spotted B. Here. सोवा पकड़ रहा हूँ। सेज पकड़ा। चल सेज गई। Well fought. चल से लड़ाई कर ले। One enemy remaining. ऊपर नहीं है यहाँ पे। Spike down B. मेरे को अजीब अजीब साउंड्स क्यों आ रहे हैं बे? Let them try to get through me. नहीं मैं किसी का स्ट्रीम नहीं देख रहा। ना फ्रॉस्ट देखते फ्रॉस्ट। I hope this one's exciting. Show me a target. चलो भाई भागो वापस बैक। Enemy spotted. नाइस वन। Here. Breaking them. हाँ 80। I've got your trail. दोनों वहीं पे। Weapon here. Reloading. एक पीछे से है। Enemy spotted. Last player standing. Spike down A. एंटी मैं उनका टॉप फ्रैगर को ले गया। तुम लोग क्या कर रहे हो?
Match point. 10 का असिस्ट भाई मेरा तो आज तुम्हें परसों भाई हो नहीं रहा ऑपरेटर तो मत करो। I need a gun. आ Attackers baigen win. Correct and अंकुश तो स्ट्रीम में है हेलो वॉच पार्टी करने जा चलो रहा मैं हूँ जाता हूँ रे, बाय बाय। मैं ओके बाय बाय मैं भी चल ही रहा हूँ कि बाय बाय आप तो फ्रैग नहीं अरे शुई आ गई शुई वेलकम टू स्ट्रीम कैसे हो मैं टॉप फ्रैग नहीं बैड ही करा अब वॉच पार्टी करेंगे 1 मिनट अब इसको रहने दो आपका हाथ टूट गया यस वॉच पार्टी GE was VC जा रहा मैं वर्सेस में किनका चल रहा है जी ZETA चलो हाथ टूट गया रे black screen and now you can see display now you can see this rafters and that's just going to be a little bit tougher for ZETA to hold. You got Polvi with the blades now. Lightning fast, first shot down. Snaps to the top of pipes, and that's going to be Polvi up in the air. We've got Bankai coming in now, and that's going to be down to Sugar here, trying to stop this push, but it's watch party round win G. And they Oh, find a really good timing. Right as ZETA feels like maybe they've got some comfort to try to put the spike down, is when GE re-aggresses lightning fast. and just completely catches ZETA a bit off guard, where they're just not quite ready. Lightning fast has been looking really crisp. सीखो इनसे सीखो तभी लगाया हूँ वॉच पार्टी सीखो इनसे भाई सीखो मैं भी सीख रहा हूँ No problem. Russ there holding the smoke angle, and there you go, some smiles now for GE. Now they're starting to feel it. Yeah, they're starting to look a lot crisper. You've got ZETA on the back foot economically once again, where they're into a few sheriffs, a bulldog, but the buy is very weak. It should be enough for Global Esports to take things home. And that's just kind of what we were talking about from the previous map too, right? Global Esports, it's not all doom and gloom. You come in with a clean slate, mental reset. They just might be able to push us into a third map. But look at the volley of utility from ZETA Division. They really want this site. And Euron was so ready for where Polvi would have to escape to. Right, up on top of the wall now. But Global Esports expects it, able to get those shots down, but Hiroran, okay. Still able to kind of stand his ground. Couple of kills going his way, but he's got a couple more targets to hit. Not expecting Russ up on top, so that's gonna डीसी से बुलाऊं क्या डीसी से बुला ले जिनको देखना है वॉच पार्टी ये कौन सा क्या चल रहा है ये मैच चल रहा है मैच Do have the no command for Hiroran. This is nice positioning here, trying to cover as best as they can for Polvi, but using that wall against them again. I'd say if there's anything to fault GE for, which there isn't much, they've been playing very, very good. Some of those walls have worked against them. ZETA's able to kind of take advantage of it, but other than that, lightning fast. His shooting's been crisp. Polvi's been a real nuisance on that A side at times, especially with those sniper rifles in hand. Now he's going to be taking a peek down mid. Laz though. टूर्नामेंट है वैलो का वही देखो 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 मस्ती करो VCD पैसिफिक चल रहा है
Pacific got Laz on PCT. this bit of a lurk towards A though, and that's Olvi. what I keep my eye on. The rest of them potentially trying to push into एम डिफ देखेंगे एम डिफ यहाँ पर हम with everyone pushed up this far. देखो कैसे रोक रखा है जब तक सारे उनके टीममेट इधर नहीं आते तब तक कैसे रोक रखा उनको सारी एबिलिटीज यूज कर दी ये Still the shots. I mean, Deb, despite being able to get a double, I don't think it's going to be enough. I mean, it just came down to dry duels, peeking in and out of yellow. उनका जेट अच्छा जेट और केजे अकेले है केजे पूरी साइड एंटर कर चुका है ये They know it's no longer going to be. अब रोटेट आएगा उनका What they might not know is how टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ था क्या अरे दूसरा टूर्नामेंट आ गया Yep, and that gets the ult back as well there for Bankai. So lockdown in play. He's gonna have to get this plant down, find some safety, have a couple vandals. You're gonna have to go deep back towards your spawn for ZETA. Try to make this work. Laz gonna maybe try to go for an early pick, but that lockdown should be coming right outside of the site here. And would definitely force Laz back to A. Oh, in fact, it's just gonna be the Dizzy. They're actually running forward without the lockdown. There goes the first half. Baits out the peek from Deb. Well played, well shot by Bankai, and then lightning fast off of the wall finds Laz, trying to stay crouched in a corner. Global Esports now with the streak. Yeah, they don't even need the lockdown. They're just that confident in their numbers advantage and their ability to take that space. Depp losing his trade early made it basically impossible there. GE, great patience to make sure they don't give Laz anything to work with. You know, Depp gets able to find some space on the other side of the map, but again, the coordination here for GE starting to look so good. Certainly the fans in India have to be liking the bounce back that we've seen so far. क्या हो रहा है नॉर्मल टूर्नामेंट है अच्छा मैं खुद नया हूँ इसमें क्या हो गया टाइम आउट You need that to support Depp in those entries, but we haven't really seen so much of it. Even in that previous round, they were just kind of dry peeking outside of B. And, you know, with the setup from Global Esports that they had, you got multiple targets, multiple players up on elevated angles. It's just that much more difficult for ZETA Division to hit. So, great setups coming out from Global Esports. Absolutely. I really like the way they're playing. They've got a really good sense of the timing. Like, they've dodged any attempts, especially on the A side, at some of those util dumps that ZETA has tried, and then they found the opportunity to then strike right when they're kind of least expecting it. So it's a really good mental game that GE has coming into this map, on top of much better shooting. It seems like they were able to do that reset that we were talking about at the end of map 1, and that's phenomenal. That's exactly what you want to see out of this team. Couple big ults again for ZETA Division. Still that null command, lockdown for Laz, blades for Depp, but it is an eco, so let's see how much they're going to invest on ये it. एशिया There's always that lockdown as दिख रहा है सारे एशियन की दिख रही है एशियन लेवल पर है क्या टूर्नामेंट for ZETA. यस यस पैसिफिक का ही है जितने पैसिफिक वाली कंट्रीज है ना वो उन सब का है Any vision just yet, using that smoke to kind of push back Bankai. Trying to sneak through. Bankai does have the alarm bot available as well. Okay, there's that Dizzy, but no! Depp! Shooting at the after image of this. It's going to be Russ and Bankai to shut them down. ZETA Division completely lost the plot. Sugar Zero trying to make use of a little window, but Bankai just says, hello, you know, you still got to watch your sides. All that's left is none other than Laz with a Sheriff. A good dink on the Blaze King, though. But it's definitely not quite going to be enough. All the heal from Lightning Fast as well. And we're just counting down the seconds to that final shot through Laz's skull. It's 6-1. Not much was going to happen in this round, but that was not what I was expecting. Even with इंडिया का नहीं होता होता है इंडिया का बट अभी स्मॉल लेवल पे होता है उतना हाई लेवल पे नहीं होता You don't see Depp whip like that on the Bladestorm very often. Generally, he's pretty clean with it, but that time around, like you said, I like the way you said it, the after image, going for the the place where they were, not where they are. But yeah, on Boiler, just so hard to get any other support. I mean, he gets the flashes this time at least, but he's not able to convert on the follow-up. That's what you call the art of whiffing. It's not something that everyone can do. It's really difficult to pull off. But I don't know about that.
back into it. I think one of the things that ZETA has yet to solve is really, of course, aside from the setups, the anti-flash positions that Russ sometimes plays, and also Polvy's operator. Now trying to just full send it into the B site, along with Dap, the tailwind, they managed to get a little bit more space. Little homie actually able to get the spike plant down this time. Spike planted. It's going to dodge all that utility too, so they're able to get it down and then get the Viper's Pit as well to go. But behind it, you still have a lockdown if things get really dire. Still the Thrash, and there goes for Euron to really clear this out, to really make sure this is safe, but You should run. potentially a little bit tricky as both lockdowns come through. Depth though, good for one. There's the 2 lockdowns now. Sugar Zero having to push forward. He actually able to take down the initial lockdown from bankai, but then you've got Russ. They've managed to kill the diffuser, and that's going to be enough for ZETA Division to secure the round. That's what the timeout was for. You know, although we saw, you know, a bit of a fumbled eco, a bit of a fumbled blade storm, they managed to come in with this setup, this execute onto the B site. Oh, and it's a must-win round for ZETA if they're going to come back in this map because of the ults they had to invest into this, right? Thrash, Viper's Pit, Lockdown, 3 huge ultimates that have to come through for them to get this round. Now they play it great. The spike is a bit outside of the Viper's Pit. Not sure if that's intentional or not. That's intentional. You think it's intentional? That's kind of what I've been seeing it a few times across the various regions that teams will start doing that now. And I agree. I think you can hold those angles well enough that you don't need to necessarily go that deep. You can always just spray at the generic angle, you know? Yeah. I even saw like the toxic... and rely on your mollies and things like that. Exactly. The snake bite that was shot onto it. But now back in the next round, ZETA tries to randomize and swap back over onto the A side depth with the tailwind. But again, look at these anti-flash positions. Dizzy takes a second before, you know, the blind, the goo hits. So Russ is still able to shoot that down and snaps back onto depth. Great response from Global Esports. Exactly, the protocol's so good. I mean, Laz has gotten into the kitchen, but Blaze at least kind of sniffing it out. Still, Laz able to outduel him, not before taking a fair amount of damage. Oh. That's a bit of damage, but still alive enough. That's it. Him up against Polvy. When Polvy has the operator, Polvy has a better chance. On a retake, though, it's going to be a little bit difficult. So he's playing. Laz is sort of playing an anti-op spot, expecting this push. Has tucked himself in. Wow, you're behind the hut. I mean, this is. It's a bit of a crossfire too if Sugar Zero turns around. Oh, we read it. Oh, you don't opt the original operator. You know what I'm saying? Yeah, yeah. We've got the wall now, but Russ just sticks. Wait, the wall is enough? No, you've got the mosh pit, and that takes him off of it. Sugar Zero going in for a couple more shots now. Last with a quad kill, and ZETA has managed to recover. I mean, this is Laz taking this round over for ZETA, getting so deep into kitchen, able to get so much space and winning that really crucial battle there. The utility threw off Blaze King just enough at the exit towards the defender side of kitchen that Laz is able to win that battle, and this is really smart positioning. That's Laz, just like you said, kind of, he knows how operators like to play, and he's able to read that. And I approve this message. Yeah, okay, there we go. He knows they're starting to figure it out now, but again, early in that round, GE, like you said, doing so good with their anti-flash positioning, making sure that ZETA can't really... वॉल गंदी करी, हाँ होता है भाई, ये भी हकते हैं भाई, ये भी इंसानी है, ये तो एकदम मेरी तरह खेल रहे हैं, of course. ओहो ओहो ओहो. ZETA's momentum. Laz, though, up the zipline, actually gets the shot onto Russ. No more anti-flash for you. You've got the barrier off to block off one of the potential paths into the site, but you still have Euron and the rest of them managing to push through. Depth, use up the updraft, he goes on top of the barrier orb, but he's not needed. Euron's already done enough work on the other side. Depth just to finish things off, and ZETA are very much back in the game. It's 4-6. Scary for GE. It looked so good for so long. Now 3 in a row for ZETA has them right back in this thing. Thought maybe this would be an okay time for a timeout from GE. Try to figure out how you can adapt to what's going on. That's just unfair. Pro peoples, हाँ सुई बहुत pro है. That's just Apex Legend में. No other way to put it. I mean, Laz just going for the spray and pray, and it worked. So yeah, I think this is a great time here. I think GE had so many good reads, had so many good setups, so much anticipation,
of what ZETA was trying to accomplish. We're able to shut it down nicely. But this time around, I mean, ZETA denies the orb early. Yeah, they lose a player, but I mean, Laz is Laz. What are you going to do against that? And what do you do? And then they're able to get deep enough that, you know, players like, you know, Depp and Yurong can really get in there and do some damage. What are you going to do? That's the answer that Coach Spin needs to answer, because, you know, past couple rounds now, what we've seen is that we had those anti-flash positions. We talked about it. ZETA has adjusted. You've got Laz, you know, coming in with such antics. You've got Depp trying to throw them off, you know, going up on top of barrier orbs or walls like that. And it just gives ZETA that much more space to work with. It's a little bit tougher for Global Esports to make use of that. So now they've got to come back into control. You've got to dominate the game, you know, throw something, a bit of a curveball at ZETA that they have to adjust back to. Yeah, wow, lol. Apex Legend HRR गेम में एकदम प्रो बस दिखाती नहीं नजर लग जाएगी ना आहा अरे वाह ये लोग अपना मुंह कैसे से रखते हैं मॉनिटर पे इतना क्लोज हाँ ऐसी खेलेगा तो इनकी तरह बन जाएगा समझा ट्राई कर नात्सु की लगी है नजर नात्सु की Maybe it was a bit of movement and accuracy, but I love this. It just gives them so much information about what's going on the map. They know that ZETA can't push A, and they're all shifting over to B. The situation is incredibly tense. Oh my. Not quite able to secure the kill. Sugar Zero just kind of doubles and hangs back. Exactly. Teammates from Garage able to get the kill, but now it's up to Lightning Fast. What a tap. A bit of a double kill. Russ up from Snowpile 2. And that's enough for Global Esports to secure themselves another round. But it's just kind of one missed thing there for ZETA on their execute, and that's the angle that Lightning Fast is holding behind Yellow. I mean, that's all it took, and that shut the round down. Russ, the great follow-up on the back of an excellent play, as he knows that ZETA's going to have to try to push Yellow to take care of Lightning Fast, and he's right there, sort of finish the job. So again, you can see that there's no awareness of it until the player dies, and then Sugar Zero is like, uh-oh. And then bankai able to hold off the flanker. So very nicely handled here by GE. That was a really good bounce back. मैं अंधा हो जाऊंगा इतना क्लोज रखूंगा तो इतनी नजर उनको सब जो चश्मा लगाया उन सबको सब चश्मा लगाया ढंग से लेकेगा setups. You know, now we're seeing an adjustments in the setups, and it works out better for Global Esports. If they can take this one 8-4 as we go into the second half, might be even better for Global Esports. Oh yeah, you gotta try to find a way to deal with this op. Not gonna happen. Wow, walked right into it. Hiroran not having a better time on this second map. Hiroran maybe a little bit better, but you know that's the thing. Initiator's gone. It's gonna be a little bit tougher for Depp to work his magic. Maybe it's just Laz who walks up by himself, and that's all it takes. I think GE just had to destroy their own wall so they can get over to B where Laz is causing problems. Oh! He's unreal. Okay. What? Lockdown being pulled in. It was the last round. I guess trying to get a bit of space towards B-Star. Maybe sell a bit of a fake, but not quite enough as his teammate falls as well. So, second half, 8-4, Global Esports takes the lead. Yep. This is exactly what they needed. A great bounce back, a great read on this comp. They really understand kind of the machinations of what you're trying to do with this KO Gecko. And it doesn't quite seem like ZETA's quite there yet with this comp. They actually beat GE on Icebox previously, but this time around, you know, it looks like GE has really done their homework. भाई monitor eye gear वाले होते हैं सारे अच्छे से. I mean, I haven't seen that wall be super effective, to be honest. But Lightning Fast has just been so good. घुसे पड़े monitor के अंदर. Shots have been great. So who gives a crap what he's playing? Like, he's doing really ZETA nice. wins. And that's what matters. So I mean, I think it looks a little bit, that part of the By ZETA bundle. It looks a little bit rough to me, but I don't think that it's a bad idea at all. I mean, I think Sage is still perfectly viable on this map. But that part of it, whatever, doesn't matter because the rest of GE is playing great. That's the thing. We don't really see any like
exceptional grim walls or any crazy spots or whatever. It's just that setup, the defensive setup from Global Esports on their defensive half worked out well against this double initiator composition from Zeta Division. Previously, we actually saw Zeta Division playing like something interesting like a Harbor. Yep. They didn't bring Harbor it out Viper, yeah. this time. So, I don't know, maybe that's one of the things that kind of throws them off a little bit. The double initiator isn't quite working out for them. Like you mentioned before, we don't see that combo utility. Yeah, I think the Harbor Viper started to get read by the other teams as kickoff went on. So I think absolutely you need to make a change. This is absolutely not a bad comp at all. A lot of teams in the world are running this exact same comp on this map, but हम इतना कुछ नहीं ट्राई करे तो पीछे चप्पल पड़ जाएगी रेल भाई रेल like you said earlier, sometimes not able to support depth, sometimes getting caught in positions where they think they've got the flash and they can push forward, but Polvy's still able to hold the angle with the op, things like that. But depth getting spicy. There was that dizzy, but the blind shut down. Yeah. Very easily dealt with. Yep. It's great cover, and I mean Polvy's just expecting it. You know, the depth trying to make some hero plays, trying to get Zeta back into things, and just reading it again is GE. They have a great feel for this map. Both sides trying to throw jabs at each other, but Global Esports just doing a much better job at kind of slipping and getting a read for these punches being thrown at them. Now hanging back, they're waiting for a movement from Zeta to counter. आ गया आराम करके अच्छा बढ़िया बढ़िया They're just trying to play it safe. Yeah, they're expecting a lurk from someone, whether it be Laz or Sugar Zero. Right there. But that information right there, really huge for Zeta to get. So Hirodon with a nicely timed knife, you can kind of really start anticipating 30 seconds left. that this is going to be a. No, but still, nobody comfortable to fully shift over. It's lightning fast again. He's been so good. I mean, look at how they approach the site from both sides. Some on top of pipes, some coming out from the other end of 410. Laz now trying to hold up under Heaven, and it's just not quite enough. Sugar Zero. Spike planted. Trying to sneak in. He's got a classic. He's got 3 targets to hit, though. He is Sugar Hero. Is it time? You gotta put on your cape. Gotta change your costume. You managed to stick it half. Oh my god! What a connection onto lightning fast, but Russ able to extend just by a bit. Gets his head offline. It's almost the same thing that happened in the last pistol, basically. Jeez Louise. Still, GE gets it. I mean, again, they're showing great patience here. That they're really being diligent about catching Zeta off guard in the beginning of the round. अरे डेंड्रो आया क्या अरे Getting any of these flanks for free, things like that. ऑल इन ना तो भाई के really darn close. 22 वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो मुझे लगा था स्ट्रीम में कुछ हुआ होगा स्ट्रीम ऑफ ओह हमने स्ट्रीम ही चेंज कर दी फिर से जा आराम कर ले सागबा भाई 1 hour enough for now stream off हो जाए उसके बाद रात को उठूंगा सीधा हाँ तो भाई खेलना सीख रहे क्या हाँ खेलना सीख रहा हूँ मैं सीखता हूँ भाई Sure, this is a good idea. Zeta still just staying tucked away. They never read it. I mean, they felt like it was a trap on A, I think. Oh, all the flashes being thrown. We're getting Valoranted. Zeta are landing their shots. Yudon and Hirodon with the classics actually able to land things down. And with the pistol, I thought it was going to be the outlaw that he picked up. He took down bankai, and now Zeta has turned things around. I mean, I feel so bad for GE right now because they've been reading this map so well. And this is the one time they don't. This is the one time where they overthink it, and it costs them. Because you have to, they got 0 contact in A, and that gets in your head, and you're thinking, it's a trap. Like, they're hiding, they're playing a bunch of, like, anti-flash positions or something. Admiral Akbar's just whispering in your ear. Like, what? So, kind of an odd decision from लगता नहीं हमारा कुछ काम है मैं सो जाता हूँ वापस सो सकता है काम तो नहीं वैसे क्योंकि मैं अभी खुद में खेल नहीं रहा तो चैट में खुद संभाल भी सकता हूँ No, I mean that was
I feel for GE. I think they didn't make a bad call. It would just happen to, again, there's like gambling going on both sides, and they just, you know, they flip the wrong side of the एक तो coin. ये मैं स्ट्रीम से गायब होता हूँ, I don't think there's anything to be super concerned about. दूसरा स्ट्रीम खोलता हूँ और वापस अपनी स्ट्रीम में आता हूँ, टॉप मैसेज आते हैं, ऑल मैसेज की जगह. Rosses look good too. Polvy's on point with sniping. Okay, गाड़ी लो. You look pained. Yeah, in the long run, I think that's the thing, because if you look at how Zeta Division are playing right now, the way that they're holding these defensive positions, it's so far back. Global Esports doesn't get a single lick of information. So it comes down to the executes. They make it fast, they make it heavy. It could be enough, but Wingman gets shut down. No spike plan available. Gotta play past the toxic screen too, so just swinging out, trying to find what they can get. A couple of sheriff shots, managed to secure a couple of kills. Depp now with the Outlaw has to come back into this round. He's got 2 shots in the chamber. I don't know if that's going to be enough though. Even the res gets a puncture on towards Russ. The slow on the other side to deny this one spot. 2v1 है. Looking to possibly pick up the weapon. Tries to mask the sound with an opening shot. Dylan's onto 410. Another cloud burst. Still a snake bite as well. Oh, has to push through though. Oh, look at lightning fast. With the pistol. Death able to spray, gets the quad kill, and sticks the landing. Zeta Division. अगर आराम करना है तो कर लो. Global Esports might have come back into the game. Yeah, I mean, you got to feel good about that round as GE. You do a ton of damage with those sheriffs. You have some really nice plays. A really good recognition here, though, by Zeta to quickly shut down the far left angle of that wall from their POV, because that's where you know that Wingman's going to go. He's going to get, you know, they're trying to use that edge of the wall to position the spike, and that makes Wingman go further in, so they're not able to get that plant down as quick. And if they had, that probably would have been round, because they just could have bought time, and instead it gives Depp just enough time to get in there and finish the job for Zeta. But man, that was so close. So a lot of good stuff for GE, despite having a massive weapon disadvantage. His nose. Oh. Hopping देखनी है हमें. Really close to it too. Global Esports having some of the right ideas, but again, when it comes down to how Zeta are playing, now you've got this bit of a roadblock outside of B, the rest of them walking into A site. Zeta's like, maybe if we leave the A side open again, but with that operator over there, certainly they don't want to mess with it. No damage done either way. Don't have Wingman going through yet, though. They're anticipating that Zeta might be around the corner, ready to shoot him down. Bit of fragment secures the corner, so now they managed to go through it. Polvy able to cut them off on the rotation, making sure that nobody comes through on the entry. Sugar Zero, though, just a bit of noise, and all of a sudden, Bankai has to watch his back. They gotta keep that pressure on that backside, at least fake it, but okay, good thrash. It's gonna be tough. Jermon's still able to stick it all the way. Okay, back into it. Nobody from Global Esports is pushing now off the spike. Depp with the antics drops down, but Lightning Fast and Bankai have their boots planted firmly in the ground. Global Esports manages to defend. Just great stuff again from Lightning Fast. 17 and 10 right now on this Sage. It's very battle sagey. He's just so crisp, shutting all these attempts by Zeta on these retakes down so quickly. He's so fast. Great hold there by Polvy. Able to get up, find that opener, make it that much more difficult. Yeah, three kills in that round, and he's pumped up, and he should be. He is having a whale of a map. Time out, okay, chalo, time out. I mean, you talk about battle sagey, that's the thing. Because he's not just, you know, using the walls for some of these cheeky angles or anything. He's actually getting into the thick of it. Yeah. And I think that's something that maybe Zeta Division doesn't quite expect. No, I think you're absolutely right. I mean, I think Zeta's a lot of times getting caught off guard by the positions of GE. You know, with certain players being pushed up further than maybe you expect. It's a lot of bait and switch. It's a lot of ping-ponging. For the side of Global Esports on this map, we've seen it time and time again. And that has been giving Zeta some problems. That was something they were doing pretty well. GE versus ZETA है, उसके बाद होगा. There's a lot of things that still feel like they need some work with this new comp that Zeta's attempting. Precisely. It just almost feels like it's not fully
fleshed out yet. Meanwhile, Global Esports look completely prepared. They have a lot of options and ideas, different pages from their strat book to pull out. 10-6 right now, and with double digits secured for Global Esports, both sides are looking for that knockout punch. Yeah, and if it's gonna be ZETA finding their way back into this, you feel like it has to come a little bit whiffy, but gonna have to come in the back of this Blade Storm. It almost feels like this has to be that moment where Depp kind of takes over around on this eco for ZETA. Yeah, if it doesn't, then you're in danger of match point, or map point, so it's gonna be... I think GE heard this. Really, really... Copy killed. Oh. Poison's off. That's huge. Great shot. Now B is an option. Rotation's being pulled over. Let's see what kind of call IGL Russ makes. I guess just waiting for reinforcements and then the slow march forward into B. Yeah, it's taken quite a while. Felt like they were looking for any other lurks, but again, wall up, able to give Wingman a little bit of safety there. That's a good wall for that plant. Really makes it difficult. Along with the toxic screen too. Yes. Retake not looking likely. Unless Depp. I mean, even if you jump up with the tailwind, this is not a good angle for you. Yeah, he's out. He doesn't have any of that. Yeah. Simple shot from Polvi. Repositions. Everyone's still holding up around yellow. Just one shot from Laz is all that ZETA got. Meanwhile, Global Esports devours everything. Fantastic stuff. I mean, just कुरकुन पहला मैच तो ZETA बहुत तगड़ा जीती थी ना सेकंड ने जी जीत गई. You know, Depp has run out because Depp rushed over to Snowman to thinking that it was going to be a really fast rotate for GE, and it just doesn't seem like ZETA has the same read on this map that they did on Sunset. It seemed like on Sunset, every maneuver that GE was trying to make was accounted for. It was red. Let's go. पनौती मत लगा जीतने देना. You guys are feeling it now, and you love to see it. So a little bit of a push to get up on top of the belt, and it's a pretty quick hit. Blaze. Oh, he gets flash. What a setup there. फ्लैश कैसे आया? Looking a little bit better this time. देकर कुरकुन सीख ले कुछ नहीं बोल. Old G hits hard. Position to strike. Gets the double. Spike dropped. ये राउंड तो गया. Global Esports now in a tough position between a rock and a hard place. You can't retrieve the spike. ओ भाई ये क्या था? ये क्या डैश था? Second. He's got 3 more targets to go through. अबे? Action, yeah, it's just tough. Depp swings out along with a teammate. No collateral kills this time. I thought maybe Polvi was going to get something done there. He was really crisp with that operator. Doing a nice job, but this early kind of anticipating the pressure up mid. Set up by Laz and Hirado perfect. And Laz and Depp shutting rounds down as they are wont to do. Yeah. When they can feel it. And a lot of teams are going to play behind that box and A like Depp just did for that anti-flash. That's the one position that I see left unaccounted for more than I'd like, and it's not just here. It's not just in that particular round. I've seen it a lot globally. That's the thing. We saw a little bit of it on Sunset too, some of these corners. It just works out so well. Sometimes you feel the pressure and you forget that someone might be playing around a spot like this, but now you're aware. It's tough, right? Because there's so many angles on that A site you have to worry about. मैंने कुछ नहीं बोला भाई वो उनकी गलती राउंड जा रहे हो. That extra line of flashes here for GE. Similarly to yellow on B as well. And I think that's the thing. So trying a different approach this time. Going out from around Pipe's angle. You've got Wingman and the wall coming up. Spike plant secured. Polvi able to retrieve a weapon. Punches him down. आगा जेट ने Alif shots welcome stream. कोई भाई को बोलो. Lot to work with. Waiting on that lockdown. Oh, lightning fast. Time though. If lightning fast fends off for, maybe one more kill. Okay. But they're not pushing in. Swarm grenade out. Slowly going through now. Ben. अच्छा आप म्यूट कर दूँ क्या? Russ has to stay alive, but not quite gonna make it happen. Nanoswarm able to burn off the first. Yeah, that's not enough time for ZETA Division to secure the spike any longer. My ultimate is ready. And with that, Global Esports gets towards map point. I had to focus for a second. Brilliantly played here by bankai. I was a little bit worried that if Russ got taken down quickly, that maybe ZETA's able to kind of
figure that plant out and able to shut it down, but they're not. That tricky positioning, as you've come to expect from Bankai, been known for it for years. This time it's the nano, and then he's able to find that nice angle. That's a great setup, great thinking through into that. मैं कुछ नहीं बोल रहा उस चीज के लिए. Zeta never even had Last match. iota of an idea that it was happening. I thought, you know, maybe if Zeta continues to play like a really information-starved defense, they would be able to pull something off, but it doesn't quite work out. Now Dep goes in for a bit of a preemptive strike, and Global Esports has to rethink their strategy. Hanging back in, maybe looking for a bit of a punish towards... They got the res. So they're trying to clear for it, making sure that it can't get punished easily. Yeah, nicely done. You don't know? He doesn't hear anything. Whoa! Dep getting the information now. Dude, Laz not able to secure the kill. Lightning Fast is so good on this Sage. He pretty much saved the previous round too. Now coming back up into it. I don't even know if it's the Sage necessarily. It's just his skill. Oh yeah, exactly. It is really just his skill. For whatever reason, he's super comfortable. Now Ben getting a couple more kills. They managed to push into A. And then you've got Blaze King. Sneaky, all the way up around B. Zeta They're going to use that info. Has no idea. You got 30 seconds left too, and the pressure is on. Spike back towards B. 30 seconds left. You can at least recover that gun for Sugar Zero, potentially upgrade him to that Vandal, yeah. Okay. So you got that going for you if you're Zeta, but this is going to be an extremely difficult retake. And look at where Blaze King, yep. He's doing it right back to him. The one that Laz was playing from before. But again, I mean, the main factor is time right now. 30 seconds around or so for Zeta. Hiroran checks. You got Dep coming through Garage. Something that they don't expect. Global Esports has no idea. Spots two. Simple taps. Maybe a third. And it's all too easy for Dep. ये गलत सीन हुआ. It's just kind of like playing a stealth action video game, and he's just kind of like अलाई शॉट एक राउंड और लगेगा शायद थर्ड में अपलोड होने के लिए. Cleanly. He's playing Ghost Recon. He's nuts. He played Ghost Recon. Fisher up in here. Enemy kill. He is Metal Gear Soliding. I mean, he's just... This is so unfortunate for GE. I love what they do in this round. It's just, you know, Zeta reads that positioning from Blaze King. They're like, nah, we know about that spot. We did it to you. And then adapt with the lurk. I mean, give him that. That's easy. That's just stat padding for Dep. It's rounds like those that really make you believe in Zeta Division because they didn't have the numbers. Yeah, and look at this outlaw for Dep, knowing that the money's weak, so there's going to be a lot of half armors coming through. So a couple players there, you got three there. Yeah, 3 for GE on half armors. So this outlaw could find a lot of value. With the Blade Storm, of course, as well. Yeah. Oh yeah. But of course, Zeta playing a little bit further back, knowing the Thrash is available, lockdown as well. It might just come down to a bit of a retakes game. They can't let them get the lockdown in easily for free, though. But do we have the utility to shut it down? That's the thing. Hiroran tries to toss a fragment. It does land in place. But I don't think... No. Yeah, it wasn't close enough to the center. So, for the fragment to clear a lockdown, it has to be right in the center of where the fragment lands. So enough space for Blaze to now deploy the Viper Spin. And he's got a Judge inside of that thing. That's even deadlier. Dep tries to secure the surroundings of it with the Blade Storm. The Outlaw cutting down Bankai. But I'm waiting for Blaze King. Stays tucked away. Teammates have fallen all around him. And all of a sudden, Hiroran appears in front of his face. And Zeta continues to climb. It's 12-9 now. We've got 3 rounds to go to force this into overtime. Yeah, Dep's starting to heat up, getting that Blade Storm kill, and that Outlaw getting some value big time, as you would need. That's so fast from Dep. And this is the first, but that's okay. Good for the second. And look at how they're using the verticality here to get up and over the positions to try to make sure that whoever's still in that pit is not going to have an easy time of it. You're not going to just walk in there. You're going to clear all the edges. Use that high ground, those angles that you can get from up there. Wait, क्या हो रहा है? Make sure that, okay, if there's anybody left, they're all in the pit, and then मैं भी पनौती हूँ तुम्हारी जैसा, lol. Time push or throw some utility in there, whatever it takes.
That's exactly how you want to dismantle. Plus, Gecko is on fire because his sponsor is on the loop. Yes, I mean, inhuman reaction. They cannot let their nerves get to them, and hence we have this timeout from Coach. एक round GE जल्दी करो भाई. To send us into a third map. But you know, it's a bit of a double-edged sword. Calling a timeout at this point, Carlisle gets to, you know, have a breather as well, and gets a second to think for ZETA Division. What is Global Esports going to cook up? What can we do to counter against that? Yeah, it's going to be tough here off this eco. No ults to speak of. So just trying to see if you can do some damage to ZETA. But the pockets of ZETA relatively deep in terms of money, so they have another buy round in them for sure. Even if this one goes, well, it wouldn't matter if this one goes sideways, they'd be done. But even if they were to take a lot of economic damage, let's put it that way, they'd be fine. So definitely you would think that we saw it before where Spin will take a timeout on the eco and then it'll be the follow-up after that, but not going to be able to get into any alts really, as they invested so much in that previous round and lost it. Yurda. Nice angle. I think I saw a smile after that one. It's very calm. It doesn't really like explode and pop off if he celebrates. But he's apparently a jokester. He's apparently very funny, very like Depp really I was talking to ZETA a little bit, and Depp really likes his new players. Not ready for Blaze King though is Depp. Wow. That's a sharp flick and a half. Yeah, pushed up further. If this go in overtime, I don't know anymore which team I should support there. He didn't really register it in his brain. Oh my Are goodness. we gonna end this map off of a thrifty and eco win? Really? Okay. ये round तो निकाल दो यार जी. One. Blocks off the plant for a second. Players trying to reposition. Plant हो गया है. Sugar Zero trying to wrap up from behind. But once आराम से 3v3. I feel like Russ is anticipating this now. The rest of ZETA continuing to push forward, along with that flash from Hirodan. They need to clear out yellow. The Dizzy's great. What? Hirodan doubles back. Backstab. देख लिया. Take it away. Russ able to deny the back. Now all you got to worry about is the front door, but Hirodan steps up in the moment when he is needed. That's unbelievable. I thought after that Dizzy he was done. That was a great play from GE. They should win that battle probably 90% of the time. But the weaker guns proved to be the detriment to them. And Hirodan's just cracked today. I mean, he's having a whale of a day. I know on this map he's only 15 and 16, but on Sunset on that Sova he was so destructive. The young guns coming up big again. I think we're ZETA Division. Oh my God. It really just, you know. What happened? Hello, this is how this end? Maybe bro, alive. Maybe. Other angles, so he spray transfers. Push कर रहे हैं, push कर रहे हैं. ZETA push कर रहे हैं. Now looking for an aggressive pick, trying to throw Global Esports off their kilter. It's just so brutal when players are able to do stuff like that against you. It just is so tough to overcome when they're just hitting shots like that time and time again today. But this round, that timeout must be for this round. Yeah. Has to be. Global Esports looking to secure this map. If they don't do it on this round, they're going to go into the next one with a bit of a half-inch buy. Russ sneaks up, able to take down Sugar, but last trades. Players in position to take down B now, but ZETA has an inkling. One suppressed. Oh, that's enough information too. Yep, absolutely. Can't put up the toxic screen because of that. Nope. Gotta wait. But I really like what Russ did there. Walked through his own snakebite, his own team snakebite to get that kill, because that's not something you expect someone to do. True. Trying to be quick. Oh! That's gonna do a lot of damage. Oh my God. What? It's okay, you can heal it. You're Sage, it's fine. Okay. But 30 seconds though, and we're still looking for the plant. Tosses it over. Now secures it. Teammates a bit of suppressive fire. They managed to stick it through. Now you've got a mosh pit lineup. Look at this Where's lineup. This gonna go? Okay, and Dev has to get a bit of space too. Thresh comes in, take a couple of shots through. The flash from Hirodan, but oh no, Polvi actually shuts it down with the operator. This could be it. Global Esports might just be able to secure off this round. Another shot from Polvi. It's all down to Yudan, trying to sneak up from the sides. Gets the angle off towards it, but not चलो भाई GG's. बच गए. If this happened, my soul is no more life.
Esports into a third match. तुम This सो is exactly what you रहा want to see हो from उधर GE. जेटा A उठ गई phenomenal bounce back. यस यस Getting completely dismantled on Sunset. ओ भाई खतरनाक मैच था Super हेलिया easy, but frankly, in my mind, I felt like GE just had a much better read on this map. Was able to kind of read the positionings, take a little bit more map control for the most part, and make a lot better usage of their utility combos, their ping-ponging off of each other, all of those things. Yes, ZETA keeps it close through some individual heroics and things like that, but you have to feel really good. GE, when they've got a good game plan, when they've got that trust going, they look like they can absolutely take this match away from ZETA. It's possible. I mean, they're definitely a lot more prepared on Icebox, but apart from that, the players themselves too. I mean, Lightning Fast was having a great game on this Icebox. But you know what? Our casters are going to break down all of that action, and we're going to go back to the desk. Thank you so much, थर्ड मैप कौन सा है थर्ड मैप कौन सा है पता नहीं scoreline, but honestly, I felt like Global was very much in control of Icebox. No, they really were. I mean, थर्ड मैप दिखा देंगे शायद अभी streaking away with the round wins over and over again. ZETA was really struggling to find a footing for themselves. So a bit of a rough एसेंड एसेंड है थर्ड मैप एसेंड में तो भाई सबके हाथ बैठे हुए सेम ऑफ गुड नाइट अबे तू सो जा should I say GG in advance then I don't know but Ascend is perfect to test their fundamentals and core strength let's see picking up the KO for Hiroron, it feels like he was struggling to create those openings with it. Granted that I think it was paper that said that he had like 15-16 kills somewhere in the second half. In that first half, it feels like ये देखो she's my wife ये क्या बात हो रही है jumping around, not really having those bro she's fine lineups, those flashes out just to push G come back GE, and it feels like that really hurt the first half here for ZETA Division. On the flip side, G lose next map relax Global Esports adding in Sage, taking out the KO, definitely paid off that wall. That one Sage wall came in so clutch so many times, whether they were in defense or attack. And Lightning Fast here, obviously, on the Sage, just proving his mettle. Yeah, I mean, star-studded performance here from the one, holdover from the original GE roster of last year. Still, it's good then that it not Lotus. Yes, Lotus थोड़ा होगा. Lotus use नहीं करेंगे यार. He was still damn scary. Come first, G come back. I think that Hiroron maybe just a little bit more time on that KO to find just full comfort to be able to bring that one out. MVP. There was this kind of like disconnect in a way, and there was also these points where I think like they weren't really checking their corners properly. I think you mentioned as well where Colby got flashed by the Dizzy, and then they thought that we cleared out that boost spot for the Jet, and they didn't. So he got a shot off with the operator. There was one where Lightning Fast was holding at the back of Yellow, gets that triple kill on the B side. So there's these really good timings or just really good punishes. Magic of New Jersey should work. Sprinkled throughout so many of these rounds. I just really like how cohesive Global Esports looked on Icebox, and Depp is a total menace here. He is so good at shooting and getting those kills. But when you have those were matches Fnatic versus Loud and Sen versus Genji. वो तो अलग ही मैच थे. Talking about before we came into this map was, are they going to be able to just shake off that really one-sided loss on the opening map of Sunset? And they absolutely were. So clearly, I mean, the game plan was very sound coming into this one. ZETA still looking uncomfortable when it comes down to Icebox, and Global feeling right at home here on this map. So I think it's good that they could be able to move past, a 1-13 loss to open up a series and be able to come back in. And I think I probably should have honestly got a better read that they would be able to do that, because when we saw them after that Sunset, there was smiles on stage from Spin, Big Time, all the players. It almost felt like they were like, yeah, our Sunset's not really there yet. We kind of expected this, but it's okay because we'll run it back on Icebox. Honestly, attitude is everything. We've noticed, especially when it comes to VCT. If your head's in the right place, that could be the thing that carries you forward across the finish line. I just love that, because again, it just spans you that you don't really make that many mistakes when you're just, yes, we got this on the second map. So I love that from GE here. Yeah, I mean, good vibes means trust, and you kind of need to trust your teammates in these kind of situations. And, I'm happy for Global Esports, but what I'm less happy about personally is we had a little game, and I hate de-ranking
Oh, sorry. But you like ranking up. The question was, who wins the pistol round on the second half? It was a very specific question. While I did predict global esports to win this, I lost this one. As did Both I. did. And I hate the ranking. I hate that. So, okay. Can I make an argument for ourselves? Yes, So, please. yes, they lost that second pistol round, but then they won the eco immediately after. Global, they dropped it. They had the advantage. They're in the anti-eco. They end up losing the Zeta division. I think that that's worse than losing a pistol round. So I think that we should just keep everybody right where they are, and I don't think that we should get moved down. Because we might not have been correct, but at least we didn't blunder the advantage. No, I agree. I feel like we definitely at least lost less RR than a full, punishment of like 20 plus RR there. Move us down to silver. Yeah, I think global will win pistol. So, Acha. does this mean Asura He goes ranks up one. Okay. We go down a peg. All right. Our first plat analyst here in VCT Pacific. Oh, it's silver. I hate this so much. I felt like they just heard that I did this, and then they're like, we gotta win this second pistol. The pain, the heart pain. Well, congratulations to your up rank here in Pacific. It's okay. Those things, it's really hard to predict something that specific, but They do it before they can do it again. Congrats. So we are going to a map 3. So that's something that I can't say all of us have predicted. And it's Ascent. And historically, Ascent is a pretty good map for Zeta. I mean, yes, but also, like, not really. I mean, yes and no. Yep. This is a map that, especially last year, we saw them always going to, and they were regularly picking up wins, but they were very rarely clean wins. Tons of overtimes here from Zeta Division. I mean, you think about just the monstrous amount of OTs, how many rounds they had to play. Valorant नहीं खेलोगे bro, Valorant मैंने खेल लिया, थोड़ा watch party चल रहा है. Yeah, but it shouldn't be only pistol. It doesn't. I think it will go in overtime. Overtime, yes, जा सकता है. Ascent map है ऐसा. I'm curious to see what they have prepared for us with this squad. I mean, the only thing I can really lean on is that we're probably going to see these two players playing Jet once more. Yeah, exactly. I mean, these two have been absolutely critical in all 3 maps. And obviously for Ascent, when you have a Jet player on Ascent, I mean, this is also a maker agent. If we take the improvement and the previous Ascent in consideration, I think I should go in overtime. When he was still playing not here in Pacific in EMEA, he actually has a lot of highlight reels that's available to watch online that he's played a lot on Ascent. So at least in terms of comfortability, he's already there. Another thing that I just kind of realized when you get that last map on Ascent, when it is Ascent, is if you're a hyper aggressive team, no matter how coordinated the opposing team can be, you can always batter into be a battering ram into a site and just brute force your way in, which is what we've seen is the specialty of global esports here. Yeah, I mean, I think that, Global, they should have a decent jumping off position going into this map. I don't have any concerns about Polvi on the Jet going into this map. I mean, this has been the Jet map for so many years at this point. We do see a couple teams try to stray away from that, but that Jet is kind of always centric to Ascent. I mean, we had some really good performances from Polvi there on Icebox, some really nice multi-kills. He started off that first half incredibly hot for the squad. So I think that this is going to be the big head-to-head to watch, but it's going to be what's going around the Jets that, as I expect, it's going to be Jets. It's what's going around them that I'm really curious about to see from both teams. What kind of big overarching adjustments do we have, if any? Yeah, definitely. I mean, this is just such an old map with a meta that we've just seen over and over again, especially from these two teams. I don't know. This is the season. This is the season where everyone's gonna shift things a little bit. Again, Carlisle. Autocorrect always OP. I hope it wasn't only. सवान तो हाँ भाई आगे घूम के. If it's going to be the same comp, I think there's going to be a lot of struggles for Zeta Division because it feels like they just really can't click on at least here on that KO. And I'm looking at the stats right here. They're not really looking too hot on Ascent. Global Esports also has shown that match of the week. Who will win? A different composition into Ascent, which we actually haven't seen throughout kickoff as well as convergence from last year. So everything is up the air in terms of like how creative they can actually be coming in to this final map.
I have to ask you guys, now that we are at a 1-1 score, are your क्या predictions चल रहा है? the We are so same? back. And maybe how confident are you, whatever your predictions are now? I think my prediction क्या हाल is है? still the same because even though, you know, again, I said that the wins for ZETA have overall been rough when it comes down to Ascent. करो भाई start. She's not Korean, bro. अबे लड़की के पीछे पड़ गए तो. Even with the rookies coming through, this is going to be a map where they have a lot of comfort. It has been a bread and butter pick for them. Start the match. हो रहा. You know, maybe Let's go. reinvigorated the Ascent from the past year for the squad, but taking a look, I mean, here we go. It's just back down to just standard compositions for both teams. No surprises at all. Oh, mirror matchups. Can I focus, gentlemen? Focus This goals is going to be really before interesting. And goals. we were talking about individually. Now, when you have something like this, it's really going to come down to your ideas. But if we wanted to, we were comparing Depp and Polvi just Ascent now, है and भाई. Ascent. Think Cypher can say both in Valorant and bet. He's been able to do that. That's a good. Of the other player of the ZETA division, so definitely something to watch out for. All right, we are going to go into map 3. Let's go over to our casters because we got चलो ourselves a छोड़ो. series. Chat नहीं पढ़ा. Thank you very much, Victoria, Asarai, and Achilleos. Yeah, this is exactly what we've got. Same composition, but kind of like what Achilleos said, you kind of want to focus on what is happening around the Jets as well. You do have Depp and Polvi, and we are expecting great things out of them. And I'm starting to look like there might be some kind of mid setup here for ZETA. Starting on that defender's side, I'm seeing, you know, both the flashes, if you include the paranoia in that equation, towards some kind of maybe tiles hit. I'm not sure. It looks like they're kind of thinking about it, and I think this is going to be a big-time tile scratch, especially with Laz's position there at short. We'll see if ZETA And then Valorant be like last round before the sort swipe. of anticipated that recon dart kind of out there to see if there's going to be that early push, seeing if they could catch it. Instead, it's just a pullback right now. A little bit of caution from ZETA just on the back of that one dart and not able to really pull off what they were hoping. Maybe also hoping for a mid hit where they could counter that if GE went through there. Now they're just going to fan out across the map a bit, playing really deep on B though, giving up so much space here. A little bit of info with Laz, knowing that mid is relatively clear. He hasn't had any contact. That's going to give them the info that they can slide back over to that B side. Okay. They're going to be right in GE's faces. Definitely looking to shoot down some initial, you know, maybe 0 points as well. Polvi already diving in. Depp trying to bypass this as he tailwinds onto site. Angles are favoring ZETA division for the time being, so a couple of shots go their way, but bankai comes back into trade. Oh! Sugar Zero from stairs, though, gets shut down by bankai too, and now it's a perfect lineup for the shock dart to tase them both down to the ground. You're on. Brilliant. Absolutely brilliant with that Easy shot win dart, there, knowing guys. they're both going to be super weak. Unbelievable. Unbelievable stuff. But this is the ZETA we need to see. This is the ZETA we saw on Sunset, where they're reading the map incredibly well, and that's what gives them the advantage here. Laz is never really accounted for on short, and that lack of contact there through mid kind of just gives. What did he say? He said he was funny. He said a bad word. I cannot repeat that word. Something, man. Okay. But that's okay. But that's kind of the ZETA that that we're starting to see again. Almost as if it's a combination of both Sunset and Icebox, getting a good read, but also playing really defensively. Oh, Depp. Not necessarily overextending too much. It's just really early on. You've got the Marshall. Trying to pull it out in this skirmish. Lance has got his back. Lightning fast with the wide swing. But Huron there to back him up. And you're able to keep all the important guns. Both Bulldogs, the Guardian, and a Spectre. You don't mind losing that Marshall in that round at all as ZETA division. Glover never closed the third map in their entire history. Hope that not the case this time. That gave GE a little bit of false confidence that they could push forward, try to reaggress the angle. That's fine. It's the ego. Challenge depth with the Marshall. Might get lucky. He lifts the shot and you can outdo him. But in that depth, they're able to buy enough time with his dash and his smoke to get back and wait for the reinforcements for the rest of his team. So solid start for ZETA. See if they can keep it up.
It's also precisely why the desk was kind of discussing this. That map pick and bans are really important. The fact that this is Ascent, Global is the one that left it open. ZETA gets to pick the site that they want to start on. And starting on defense on Ascent is such a big deal, given how the map is laid out. And they're just doing such a good job at kind of playing defensively. I mean, look at the positioning from Laz. Good angle, takes down one player, and that's kind of enough damage. Because all of a sudden, the 3 players on A are prepared for that A hit. Yeah, and that sends GE over towards the other side of the map. Maybe feeling like if they've got that Killjoy dealt with, that's going to make the B site a lot more tenable to get into. Yeah. We do need Polvi to pop off in this moment. The initial entry. Oh, but he just gets tapped. Bit of a crouch. I mean, he had the outlaw, so that's what he was going for, but Yuron. Impeccable performance. Now Paranoia pushes him away, but take a look at what's happening on the mini-map. Our observers caught it too. Depp going on a bit of a journey of his own. Alarmbot catches him out, so he just rendezvous to go back with his team. Lightning Flash pushes out though, and still feeling sharp. A great flash from Russ to set him up. Oh, Depp's gonna outdo him again. Russ though, quick for the trade. 2-on-2. Yuron still has utility, not to mention Sugar Zero as well. Everything available. Meanwhile, Global Esports, they only have their positioning. Rusto with the shot. Swings out a little, catches Hiroran after hearing that flash getting popped. Sugar Zero now, Paranoia, just to buy a bit of time, a bit of safe space. Catches an unsuspecting bankai, but now not enough time to defuse the spike. Walks straight into Russ, and look at that sidestep. Global Esports. And Russ is involved in every kill in that round. What a great round for him. With that flash over into the alley, setting up his teammates so nicely, able to deal with the Laz, cheeky positioning, trading off of his teammates, playing time very nicely. Go boys! That's a round that you definitely want to see out of your IGL for Global Esports. Tremendous round, and he's got that no command as his follow-up prize. So, Depp with the Outlaw and the Blade Storm. Of course, it's Odin time. It's Ascent. you just know it's an inevitability. It's match made in heaven. we don't mess with these. Truly, this is yes. The Guardian counter for it though is something that we've been starting to see now, and Yuron knows to walk away from it. You want to avoid that for sure. An Outlaw as well could potentially be used if you felt like it, but with half armors for side of GE, Depp's Outlaw, on the other hand, could provide a ton of value, but Diligent Space clearing, Alarmbot gone for the side of ZETA. Gonna use the drone to really make sure that this space is safe for Polvi to push in. Making a bit of noise too. Ooh. If Polvi does push in, yeah. Laz is ready to greet, along with Yuron as well, and that Odin. So that's why Depp made a bit of noise, just to kind of bait Global Esports into peeking down this pizza/market area. Funnels them in towards A short. As long as they can block off this entrance, they don't get to come in for an easy spike plant, ZETA should have this round. And then you can pop the ult too, to make this hit even harder for GE. Gonna have to wait this out or try to get it done with guns. Yeah, you got one player who can Paranoia in. Oh, Russ winning that! Good shot. Yuron from behind though. Great timing with his Odin. But the double swing from Global Esports, they capture the site. They know where Yuron is, and they manage to trade him down. Laz is the only one left. Tries to make a quick move, but completely surrounded. It's Global Esports coming back in the game with a 2-2. Yeah, phenomenal stuff here from Russ. Great work using his ultimate to make it that much easier for him. Now you've got Benkai's lockdown. No answer just yet. A great recon dart there as well. Forced Laz into a bad spot where he had to try to make the drop down. Got spotted by it. Makes it even easier for Benkai to react. Everybody else is fired up, and Benkai cool as a cucumber as usual. Always. Always. Just deadpan expressions. But who knows what's going on inside. Depp, oh my god. They know that, yep. We've seen this before.
And that's also the other thing about Ascent, it's just how much have teams, you know, figured out from each other at this point. Which is, it's imperative that Zeta Division brings new flavors, especially in this Pacific Stage 1 matchup. Still very much aware and in position around this catwalk area. Global Esports bypasses it. They walk through main, a couple players coming to reinforce towards top mid. Door's been shut. Should be an easy spike plan any second now. Here. Great timing on that. To buy a little bit extra time. Take that Blade Storm temporarily out of Depth's hands. Gun Dart has to be cleared. This looks like a phenomenal post plant setup for GE. Oh. Clean and easy. You got players up around door generator as well. Russ right underneath Hell. Pulls them back in. Third kill secured. Russ is having a good game on this map. He's having an insane game. Absolutely one of the best maps we've seen from him so far since his move over to this Global Esports squad. Just really reading the map so well right now. RGE in general is not really allowing any shenanigans from that Blade Storm of Depth to really find any value. Show you, scary omen. And now Depth is able to get into an op, but you do have Polvi with the counter op. Odin's on both sides as well, so. And then didn't need to use the lockdown for GE. The round was clean enough. They were able to find those picks early. So now they can really take their time with this. Be methodical on the map. A lot of attention in towards mid for Zeta. And now they're really crunching in towards mid. I mean, they're really expecting something to come through here. But it is sort of a feint from Global Esports where they're going to put some pressure towards B. Polvi, hoping to see if he can catch him sneaking out. He does. Good flick. You should run. Attention brought towards mid has all been for naught. Global Esports just kind of in control of things, you know? Throwing a couple of jabs, a couple of feints, trying to bait Zeta into peeking into them. The Odin now being fired off, but it just pushes Zeta Division a little bit further away as Huron reloads. Huron may be able to get one frag, but traded off by Polvi. The From the Shadows invested by Lightning Fast as well to secure Spike plant. I think Zeta might have to consider a save pretty quickly. Especially got two big guns, yeah. That's the thing. Dep's still pressing forward though. I think he can't quite get out. Recon kind of tags him as well. Blaze King, good information. The Odin is firing off. Sugar Zero a couple of kills, but now when it comes down to it, you got two targets, Dep. And you've got an operator. Not an optimal situation to be in, so. Oh my god. Tries to back out, but just the incoming rain of bullets catches him in the back of his head. They demand a fight. Just brilliant. Hey guys, I have to go somewhere. So देख लेना ऐसे जाके मैं चलता हूँ टाटा बाय बाय रात को मिलते हैं गेंशिन की स्ट्रीम के साथ बाय बाय गाइस sayonara. I lost my best friend 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me.